So first of all, I would like to tell you what is open roads, how it works, why open roads instead of MX or Civil 3D. So it's a, tool which is which can be used for a start to end process of for the designing of highway or for the roads. So it's a design intent software. The road design can be done and finished in a faster manner, and less drafting and more designing is there. And every time you don't need to change anything from the start, right from the start to end. If as we know, our clients are NHA, MORT, or PWD. These are the three agencies in India which develop roads. Mm, no other agency is there to develop roads. So every time the clients ask us to change this design, change the alignment, change this portion of alignment or anything else. So this actually works. It is a design intent. You don't need to change everything. You need to change only that portion where, and rest of the things will get automatically changed. So that's why it is main intention is to design intent, and rest 2D, 2D, 3D. Beyond that, we can do drainage design, utilities design. Also, we can do this. Drainage and utilities are used in, especially. I mean, in the DPR also they are using, and at the time of construction also they are using. So to locate the utilities, to uh, locate the ROW, and to extend, if you want to extend the ROWs. So this all things can be done in one software only, instead of using AutoCAD separately or Civil 3D separately or something like that separately. It's a simple software. It's a basic importing survey data, creating terrain. Terrain means you know what is. If I assume that those who are attendees, they have some knowledge of software. Not only this open roads designer, but they have this knowledge of software, whether it is MX Road or Civil 3D or any other software of road design. So I'm not going to the exact meaning of that word. I assume that you know the meaning of that word. So creating and editing terrain, horizontal geometry, vertical profile, super elevation, corridor modeling. This is the basic process of working in open road design, similar to all every software. And software is nothing; it's a tool, just a tool. To after all, you are the designer. You have to think what we want. So that's how software will work. And here now, after starting software, many people get. Some of you have seen the interface of the software. Some of you have not seen the interface of software. So I'll tell what is the. As soon as we start the software, we get this interface. So what is this workspace? What is this work set? Workspace is nothing but in MX or in Civil 3D, you must have using the term uh, company standards. Actually, I'm not familiar to MX road. That's why I'm not getting that word. The company standards we are using in MX road. It is just same like that in open road design. It is nothing but standard or organization standard which we get with the software. Now, what is workspace is the file, which is a file and configuration variable that defines the setting to be used in work session. And work set is the analog to the workspace. Means you can say workspace is a parent and work set is a child. So if in simple terms, I can say if you are working on NHI projects, so NHI will be your workspace, and there are different projects which is your agency is having,
of 2 lane, of 4 lane, of expressway, of everything else. So that projects are work sets for you. Or if your agency is a multi working agency, means you work for different agencies also. Those who do you get you suppose you are doing only designing, or you are a design consultant. So whatever the things you are getting from that who sublets you that job for designing, to design that only designing part you're doing. So that designing section will be your workspace, and in that whatever you are doing, that will be a work set. That company who is giving you the project, that is your workspace, and inside that whatever you are doing is a work set. In simple way, I can tell you whatever you are getting in the software is in drive C. This all, if you will buy the software, you will get this in drive C, Bentley, and configuration. This is all you get with the software. Organizations, they have given us the separate organization for civil, because only one organization don't work here. So like if your agency is working for some apart out of India, so their empirical standard, metric standard. So these all things you will get in empirical cells, civil cells. I know I think I should you expect you know what is the civil cells are. What is seed files? Seed file is nothing but just a ready-made file which you get in 3D or 2D, and in which all the units are set. Everything is set, means you are ready to work. That is a seed file. Or something like DGN. In DGN file you get civil cells, design standards, which are OSTO design standards. I have you if you buy IRC standards, then you will get IRC standards with it. Rest feature definition. Feature definition is a very good thing here. What is feature definition means? I'll tell you. Seed files, signal visibility, site visibility, signal sighting. This all you will get with this software. Widening and all that. This is metric and imperial. This both. That's why they have divided this organization in one more part. The organization civil. Coming to workspace. What is workspace? Workspace is nothing but I have told you what is workspace. See, now we are creating a workspace here, new workspace. Now, for example, my workspace is um, I'm working for Moth project. Okay, so it will create a workspace there separately, automatically. See, there is more. Inside that, work sets is there. Nothing is there in work set. Standards, this all standards. I have to generate these standards, or else the standards which I got with the software, this metric or civil, both is Indian, so metric. So I can copy this in this folder, in my mode folder, standards, and I can start working. Cells, rest like that. I can copy from there, from base file, and I can paste it here, and I can start my working. Template library is not templates are nothing but assembly, you can say. Uh, so those who are using civil 3D, they must have known what is assembly. Now workset. Now I'll create a workset here for mode. So it is a ENGSY road, for example. So this is workspace. This is my workset. I'll start creating a file here. This DWG, I will create a DWG file which automatically gets placed in my that workset PGMP MGSY folder in that DGN file. PNGSY in here in DGN file. So in workset, PNGSY folder is created. These are all the supporting files which you don't have to know. So now, as this is a training session, so I'll use training an example. And if you want, I need to use metric.
If you want me to, we can use anything. I'm using Imperial here. I'll create a new file. This new file I can save it in the workspace inside the work set of that folder, or else I can save it anywhere else in my E drive also. I want to save it in my E drive. So I'm saving it in my E drive. And here for to create a terrain and to import survey data, we need to, first of all, we need to provide all survey data, and everything is prepared in a 3D terrain model. It is a 3D feature. You need X, Y, and Z, three. That's why it is called a terrain. So this 3D, this seed file will be used here to create a terrain will be 3D. So as soon as I will click here to browse the seed, see, this is, first of all, it asks me to give a name, save type, DGN or any other, but it's a DGN file, and a seed. Then I will browse for seed 3D empirical. Where is this seed file came from? Configuration, workspace, training and example as a created mode. In that work sets, I'll be having PMGSY, training and imperial. In that standard, I'll be having seed. But currently, in my Morth workset PMGSY standards, no seed files are there. So what will I do? I'll copy it from there, from wherever I want, Imperial or standard or some other folders. I'll paste it in my that workset, in that seed folder. So I'll get, so that I will be transferred to that directly as soon as I will browse. So now we are creating terrain, so we'll use this. I'll give a name 3D Imperial and we'll start working. Sorry. I browse this because I have the file created already. That's why I browse. I think my voice is not clear. I need to rejoin. Your voice is audible. Now it is audible. Okay. So the software is opening. Until that, we will see. You will get to know what is feature definition here. See, the whatever the OpenRoad delivers you, that is a base thing which we get in open with OpenRoad software. Above that, if you want to create your own workspace, you can create your own workspace. Just a minute. Above that, you want to create your own workspace, you can create your own workspace. And above that, if you want to create your project workset, means workspace means your company's standards, means organization standards, and workset means all the projects, whatever you are using. And feature definition is nothing but what it is, and feature symbology means how it will look. Whatever you want to prepare, whatever we want to prepare in the software, workspace, in that feature definition and feature symbology is important. It is given to each and every element we prepare in the design. So going to the software. See, this is the interface of the software, in which there are many work. This is workflow. We will work in OpenRoad modeling and survey, because we are importing survey data, and the rest is different thing. This Bentley is given this in this software because हमें हर चीज किसी और से
लेना पड़ता है. जैसे someone has designed a drainage in this or a structure in StatPro, or drainage in WaterGems, or some in some other software of Bentley. So it is more easier to bring that file in this our DGN file, in our OpenRoad file, and attach it as a reference and start working. Or else what we do in Civil 3D or in some other software, ये फाइल ये सपोर्ट होता है क्या, कौन से फॉर्मेट सपोर्ट होते हैं, नहीं होते तो फिर उसको कन्वर्ट करो एंड फिर उसको इंपोर्ट करो. So this is not the issue. And the micro station, you must have heard about micro station. It is nothing but the AutoCAD of Bentley. It is simple as AutoCAD of Bentley. Whatever thing you can't do in here, you can do in with using micro station. And the best thing is, here only we get, with OpenRoads only we get micro station. If I go to drawings, so this interface is micro station, nothing else. So I will tell you about the ribbons and all that. Okay, the top of the screen is not visible. The screen was not visible clearly. Was not visible clearly means now it is visible. Okay. So this is the ribbons. This is the terrain, geometry, site condition, corridor, modeling, drawing production, drawing, utilities. These are all the tools and ribbons which we will be using in creating design. One of the best thing is there in this software. If I forgot something to, for example, where is my arc command? So I'll type arc here. And all the command related to arc will be shown. And then I will just hover over my cursor here. तो वो मेरे को बता देगा कि वो टैब मुझे कहाँ मिलेगा. ओपन रोड्स मॉडलिंग में, साइट में, टेबल्स में. सो ओपन रोड मॉडलिंग, साइट, टेबल्स, वेरियस टेबल, टेबल्स आर. बट मुझे साइट वाला नहीं यूज करना है, मुझे ज्योमेट्री वाला यूज करना है. ये ज्योमेट्री वाला, देन आई विल गो टू हियर अगेन, सी ज्योमेट्री. ओके, दिस इज ज्योमेट्री. मुझे इतना पता है कि ज्योमेट्री में है कहीं तो भी. So this is the best tool which you can search your tool here, type the name of the tool, and it will be there. So we will import the survey data first of all. There is one, this is properties. You can see the properties of any of the your element or any of your design, which you have which will get it from here. Home, primary, properties. One more, explorer. This is here you can explore your design. You can know about your design. Means at the right at the first day you have prepared the alignment center line, and after 1 month you want to know that what you have what you have designed, what you have done. So you can explore it from here. Open road standards, open road models, everything you can explore from here. So now I want to create a, I have to import my survey data. There are various methods to import survey data. First of all, survey data we get in a different format. We get survey data in CSV file. We get survey data in ASCII or raw data, means notepad file type of file. We get survey data in DWG file or point cloud data. So in n number of means type form we can get the survey data. So for that, if you want to know, I will tell you 2-3 basic
So survey, importing survey files, how we can import. So first of all, we'll go to Explorer, Survey, Field Book. I'll create a new field book by creating right clicking here, creating new. Then I'll get a arrow here. In that, nothing is there. Data files are not there. Point files are not there. Nothing is there. I will create a import file. And the thing why we are using this field book steps, because surveyor don't give you data in a one day. 50 kilometers of stretch is there. तो 50 किलोमीटर का सर्वे वो एक दिन में नहीं कर पाएगा, अगर वो CSV फाइल या फिर टोटल स्टेशन या DGPS से कर रहा है तो. If he is using lidar or something like that, then then you can get in 1 or 2 days. So as soon as आज आपको कुछ 10 किलोमीटर का डेटा मिला तो आपने वो फीड किया एक फील्ड बुक बना के. 4-5 दिन बाद आपके पास दूसरा सर्वे आएगा, दूसरा 10 किलोमीटर का आएगा, आपने वो सेपरेट फील्ड बुक बना के आपने उसमें ऐड किया. You can add in this field book only, or you can add this in different field book also. This is because कोई भी सॉफ्टवेयर 100 किलोमीटर के ऊपर का डिजाइन जो बनाता है वो हैंग हो जाता है. वो कोई भी सॉफ्टवेयर है, फिर बेंटली का रहे या ऑटोडेस्क का रहे. So that's why there is a option to use the multiple field book. So I am importing my normal raw data which I got here, and what is there in my raw data I will show you. So it is nothing but a northing, easting, elevation, and code. The systematic prepared survey file. Oh, sorry. So import file here. I'll import only one file. This server also can work in this file in this software. A designer can also work in this software, and they can pass over their uh, server can do his work, perform his work, and pass it to designer. Designer can work and pass it to next one. So someone has raised hand. You can type in a chat box. I'll see. So survey data is imported. I think so. Yes, it is imported. So we don't have observation. We don't need observation setups and control points. We need only linear and point data to create a terrain. So here the terrain is already prepared. Why this is prepared? Because there is option not to prepare the terrain as we import the survey data. And if you want to if you want to create terrain while importing, then also you can do that. So see, I went in the OpenRoad standards, feature definition, feature symbology. This I'll explain later. First of all, survey settings. I'll go to properties of survey settings. Properties of survey settings. So these are the various settings I can do to import my survey data. This general setting log file is to, if you want to create a means now you have
imported a file, create, you have created alignment like this. Afterwards, if your client said to change the alignment, you have changed the alignment to B. But you should know what was the earlier and what was before that, what was before that, how many times you have done the changes. So I will toggle this on to true. So it will create a log file. All the log file will be synced. Similarly, these are the data file paging means these are the types of files which I can types of survey files which I can input in the software. Text input, TIW, text input wizard, tripod data, Trimble DC, land XML file, or else if you want to create your own, you can create it. Word, give it title, give it a configuration name, the type of file, whether it will be a text import wizard or anything else, from where you got, which type of file from where you got, and you can create your own file also to import the data. But this is a very deep process. I have not explored that. So here in last terrain, if create terrain model, as soon as I will import my data, it will create my terrain model. Yes, true, it will create. If I made it false, so it will not create the terrain data. It will only import the survey data to my this DGN file. But I want to create the terrain data, so I make it true because that file survey file is up to date and perfect. In India, we don't get survey files up to date. That is problem, I guess. There are n numbers of method to get a survey, and everyone is doing. There is no proper process to do a survey. So this survey data I have imported. So now in this survey data, if we will go to analyze, so linear and point feature both are there. So one thing is the decorator. We'll start with decoration and end with good learning. So this is a name, field code, elevation, everything is given here properly. Name, field code 1946, elevation 6105. Everything is given. I just clicked here. Description. We don't have description, setup, and observation in this file. So that's why I didn't. So next, I'll tell you how to create a terrain separately after importing file. If we don't want to create a terrain from this, if I made it false, not true, then how we will create terrain after importing this server? That is also that I will also tell you. So here, so now rest of my files I can bring in survey data. Just drag and drop the files. Drag and drop in this field one. Now it will ask me that there are certain duplicates number of features, point feature. What you want to do about that? Means the name of that feature is 20,005, but zone are different. So what you will do? So if you know the survey, if you have done all, this is the survey part. So surveyor must know this correctly. Which zone? तो ये मैंने उस दिन कहाँ किया था survey?
तो अच्छा यहाँ से आया, ये यहाँ का पॉइंट है, तो ही उसको अच्छे से पता रहेगा। तो यहाँ पे और एल्स सिंपल स्टेप इज नेक्स्ट नेम काउंटर वन, सिंपल, उसको अलग नाम दे दो विच विल बी काउंटर नंबर वन, अलग पॉइंट रहेगा 20,005, तो इट विल बी 20,006, यानी ऐसे जितने भी पॉइंट रहेंगे सबको एक एक प्लस करके आगे बढ़ा। Something is blocking the screen, Viraj. ओके ओके ओके, okay, now I'm importing the server data. ओके, तो ये यहाँ पे जैसे मैंने खोला तो शेयरिंग में आया, इसीलिए वो उतना ही शेयर कर रही स्क्रीन, बाकी पूरा शेयर नहीं कर रही है। There is another window, I suppose, that's हाँ popped up, हाँ and हाँ that's blocking the screen. हाँ, actually I am importing the data, so it is processing, so I can't do anything now, let it be Okay. done. तब तक हम टेरेन के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा, टेरेन क्या है, creating terrain automatically, yes or no, this you have no field book, you can read this and you can survey point, linear point may not be needed to for those same purpose, so you may want to consider building and terrain model in a separate file and keeping survey data in a separate file. So that's why it is a good practice to keep survey data in separate file. Now I think screen is visible. So now survey data is imported. All survey, I just what I did, I just opened my this file, I just dragged it and dropped it here. So it was showing me only this screen. So all data is now covered and terrain is created automatically. If that option will be in, if option was on false, then this terrain was not created. Only the data will be there. Only the data will imported. So here now you can see the properties of the terrain. What are the properties of terrain? I click here, so it will show me the properties of all terrain. If I click here, it will show me the property of this linear feature. So now we want to see the property of terrain. It is created using edge method length. What is this? There are three options. Slivers. Slivers is the slivers एक ऐसी चीज है जो सॉफ्टवेयर खुद ही करता है, उसके पास इनबिल्ट एक फॉर्मूला है, वो उससे बनाता है ट्रायंगुलेशन। यहाँ पे फीचर डेफिनेशन, यहाँ पे फीचर डेफिनेशन was set to existing boundary, so that's why it is showing existing boundary only. Now I want the feature definition to be existing triangles, so all triangles are appeared. So this, what is this edge method? Slivers is जो उसका खुद का अलग सॉफ्टवेयर का खुद का वो है, वो अपना फॉर्मूला लगाएगा और वो उसको टेरेन बना के देगा। If नहीं, if you want, then you can use the edge method, and if you said the maximum triangle length should be 100, not more than that, then it will create this. If I want my maximum triangle length will be 250, then see how this changed.
the edge triangle will change. So this is the maximum edge length method. So the rest of all is major contour. If you want, you can on this eye of the triangle. Here we are getting contours. So now we'll do something with terrain. I'll tell you how to create terrain. So we'll label terrain. This is all survey part. Surveyor can know the means better. I mean, we all designer, we can also know. All contours using slope. Yes, this is here. This is the dialog box. As soon as I click my tab here, any of the tab, dialog box opens. So what automation mode, annotation mode, text alignment, text style. What I am using contours. Contours. What it says, identify terrain model. So identify, लेफ्ट क्लिक से हमने उसको आइडेंटिफाई करवा दिया टेरेन. Select from point, this point to this point. See, it will show me when I'll click here. उसने लेबल कर दिया सबको. सिमिलरली अगर कोई स्पॉट पे आपको चाहिए तो आप उस स्पॉट पे भी ले सकते हैं. फिर से सेम सिमिलरली आइडेंटिफाई टेरेन, उसको टेरेन आइडेंटिफाई करके दो बस. Sorry to interrupt, Viraj, but can you speak a हाँ, bit louder? okay ma'am, actually I'm not well from yesterday. That's why. Okay, okay, no problem. So ये स्पॉट का है, ये स्पॉट का एलिवेशन बताएगा आपको, लेबल करके देगा सबको, क्योंकि ये टेरेन है ना. टेरेन में मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज एलिवेशन ओनली. सो एलिवेशन बताएगा ये हर स्पॉट का. दिस इज लेबलिंग, हाउ टू लेबल अ टेरेन. दिस इज शोइंग अस दिस. एंड so yes, this is the one type of method to import survey data. Now I think most popular survey data that everyone get is DWG file. उसके अलावा तो कोई इसको अलग से तो उसके अलावा कोई आता नहीं होगा. I don't think so. So I have deleted the survey data that from field data, and now I am importing DWG file here. And so again, nothing is there. This is a blank DGN file. So now I'm importing this. I'm attaching the DWG file from here. This is a reference, attach reference date file. References are attached. All the rest are point cloud data, reality mesh. This all data we can import from here. Actually, point cloud data is not जो पॉइंट क्लाउड आता है हमारे पास सर्वे, वो हम इसमें इंपोर्ट नहीं करते, वो पहले इसमें अटैच करते हैं और फिर उसको प्रोसेस करके इंपोर्ट किया जाता है. दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस. सो we are simply attaching a DWG file. If you have images, raster images, aerial images, that also you can attach here. That images raster manager, and we have simple DWG file, so we'll attaching a DWG file here in reference. Yes, the attachment method will be coincident world open. Yes, now see why this came. मैंने जो वर्कस्पेस खोला वो इंपीरियल वाला है, यानी ये जो DWG फाइल है ये इंडियन स्टैंडर्ड्स के मीटर्स की है. Still no problem. Okay. Same. The same file has been imported, but it is not imported. Sorry, it is referenced in this DGN file. The DWG file. This is DWG file. You must have known.
So we have referenced this DWG file from here. So now I'll create terrain from here. There is one. Similarly, if we have imported data from this field book also and set this to create terrain model to false, then also we will get ये वाला ही सिनारियो हमारे पास आता। अब हम उससे टेरेन किसी से भी आओ, टेरेन तो बनाना ही है हमको। टेरेन ग्राफिकल फिल्टर से हम बनाते हैं। एक्चुअली द सॉफ्टवेयर इज स्मार्ट इनफ बट द डिजाइनर इज मोर स्मार्ट इनफ। या डिजाइनर we have to tell to software that what we want to do, then it will do. It will not do it automatically. हमको बताना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को कि वो ऐसा ऐसा करे, तो वो जाके करेगा, वो खुद से कुछ नहीं करेगा। एंड तो सबको बताना पड़ेगा कि इसको कि इसमें ये लाइन क्या है, ये ब्रेक लाइन है, ये स्पॉट है, ये अगर बिल्डिंग है तो इसको वर्ड्स बताना पड़ेगा हमको कि हमारा ट्रायंगुलेशन उसके ऊपर से ना लेके जाए, उसको ऐसा सब कुछ बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो टेरेन बना रहे हैं हमको। इफ आपकी सर्वे फाइल अच्छी है, काफी अच्छी है, वॉइड्स एंड वो सब कुछ, तो वो खुद ही सीख पढ़ लेगा एंड खुद ही कर लेगा, जैसे इसके पहले हमने फील्ड बुक से किया था। इफ नहीं है तो फिर आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा, फिल्टर वाली ग्राफिकल फिल्टर। तो इफ मैंने एक फिल्टर क्रिएट किया यहाँ पे, ब्रेक लाइन। ओके, सो व्हाट इज, give it a name, break line, edit filter, I'll edit by levels. Okay, उसका लेवल क्या है। अब व्हाट इज दिस, अब जैसे ये सर्वे डेटा मेरे को नहीं पता है क्या है, तो मुझे अब देखना पड़ेगा यहाँ पे ई रोड। ओके, ई टोपो। ओके, ई रोड अगेन, ई रोड अगेन, अगेन ई रोड, ई यूटिलिटी। सो व्हाट ब्रेक लाइन तो पता ही होगा सबको, तो मैं ये सब ई टोपो, ई रोड, existing terrain, break line, e road, this is a break line, and bridge is not a break line, nothing is, e topo is a break line. Okay, so this all you have to know. Do you have to know the what is the survey data, survey data ने क्या, सर्वे ने क्या सर्वे डेटा दिया है हमको, ये हमको पता होना चाहिए। अब ये मैंने एक फिल्टर बनाया, अब मैं दूसरा फिल्टर बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल स्पॉट्स का। तो यहाँ से मैं स्पॉट सेलेक्ट करूंगा, स्पॉट स्पॉट। ओके, give the name spot, spot, edit, edit by levels, and now I will, what is spot means high points, okay, low points, high vegetation, low vegetation, ये सब आता होगा सर्वे पॉइंट्स में आपके। स्पॉट एलिवेशन और कुछ हो सकता है, और क्या ये पॉइंट्स है, इनका नाम क्या है, एग्जिस्टिंग सर्वे, और कुछ है स्पॉट स्पॉट स्पॉट, ये दिस ऑल आर स्पॉट्स फॉर मी। सो ये सब कार ट्रैक हो गया, कार ट्रैक, ई टोपो, ई टोपो, ई टोपो, ई टोपो। ओके, ओके, finish. You can create this much numbers of filter. So I'll create a group now, filter group. I'll add this filter group spot and this to that. What are the break line and spot? Okay, finish. Okay, now I'll, this is, see, you can see here, create in terrain, create, see this, from this tools we can create terrain, edit from this tools we can edit terrain, analyze from this tools we can analyze terrain, from this label we can label terrain. So these are the things we can do. And now whatever that was the from graphical filters. So dialog box appears, graphical filter. Yes, which graphical filter we created now? BS. Yes. So what is the edge method you want to create? Remove slivers. Yes, I want to create remove slivers with remove. उसकी खुद का ही फॉर्मूला है।
So append to terrain, no. Append to terrain means if you have existing terrain means already मैंने एक इससे ये जो फाइल है इससे मैंने एक टेरेन बना लिया. अब मैंने इसके ऊपर सब डिजाइनिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, और फिर मैं जो मैंने एलिमेंट्स बनाया है, सेंटर लाइन, एज ऑफ पेमेंट और ये सब, इन सब से मिला के भी एक और टेरेन बनाना है. जैसे ये एग्जिस्टिंग टेरेन हो गया और वो प्रपोज टेरेन हो गया, तो मेरे को एक दूसरे के ऊपर अपेंड करना है क्या उनको. तो दैट्स व्हाई इट्स आस्किंग मी टू अपेंड द टेरेन. सो करंटली वी आर नॉट हैविंग दैट सिनेरियो कि हम उसको अपेंड करें. हमारे पास तो एक ही टेरेन है, तो हम इसलिए नो. रिमूव स्लीवर्स, यस. Data point accept, yes, accepted. Now it will create a terrain. See, now terrain is created. Similarly, हम एक्सप्लोरर से करते हैं तो भी सेम हमको ग्राफिकल फिल्टर से यूज करना ही पड़ता. अगर आपने उसमें, अगर आपको लगता है कि आपके सर्वेयर ने जो सर्वेयर डेटा दिया है वो डाउटफुल है, तो आप नो कर दीजिए वहां पे उसको सेटिंग में जाके फॉल्स, एंड यू क्रिएट योर ओन टेरेन विथ योर ओन नॉलेज. So this is the method to import the survey data and create terrain. So now we will edit terrain. Okay. We'll use this tools to edit the terrain. I'm opening just a different file. Nothing big is there, but in a same workspace. Okay, see, I'm using, I click on this. What it says? Open an existing file. Okay, so this is my existing file. If how it came, if you don't want to open this, then what I have done, files, new, again put seeds, give it a name, same name I would have given, 3D train modeling, save it here only, and that file must have opened. But now I have created it already, so it's opened this. These are my survey. I have done this survey, so of an intersection. So I got this. Only the edge lines I wanted, nothing else, no center line, nothing I wanted. This survey says this survey data is having some elevations, and now I want to create a terrain from this. A simple elements, create terrain. Again, I'm using one last option, one last tool from here, from elements. If you know the elements, so you can use that. I'm using this alt elements to create a terrain. What it said, locate next element to add or reset. When done, in this software, reset means right click. Now I'm see, I have done right click, so it's got reset. Now what is saying, feature type. What feature type? These are these a break lines or spot or what? These are break lines, obviously. So left click again. Which edge method? Remove slivers. Yes. Now it will create a terrain. Okay. Why it created this, not triangles? Because the properties here is existing triangles, or sorry, existing contours. Last time we have done. So change करने के लिए अब इसको triangles, existing triangles. Okay. So now we will edit terrain now. We will edit this terrain now. So it is a rule-based file. Rule or not to rule, that you must have known. Rule means if the file is ruled, then whatever the thing you will prepare here or whatever the thing you will change here will be get changed in your next file. See, I have prepared a file, not terrain file here. After this terrain file, I will create a geometry. Then in that geometric DGN file, I will attach this terrain as a reference here. This terrain I will attach as a reference here to create that geometry. But only thing is, it should be rule based. And if this anything get changed here in this terrain, then it will reflect in that geometry file also. This is rule based or not to rule or not to rule. My preference is to not to rule, because every time you get change everything, so not to rule, it's better.
So we will edit this model. See what it's saying. Not an editable terrain. Okay, the dialog box. You want to delete vertices, delete edge triangle, whatever you want to do. It is saying this terrain is not editable. Now what I will do, I will just select this terrain, hover over my cursor and go to its. There are many. Activate this as a terrain, active terrain model, export this terrain, add feature, remove feature, template, rules. Now I want to deactivate the rule. This file is created using rules. So I want to deactivate the rule. Now let's see. Yes, you can edit this terrain. Now what we'll do, we'll delete the edge triangles. Okay. So let's delete. Okay, see, you can see now that by left clicking, we can delete the terrain. Edge triangles. The triangles are gone. Now I'm going to add a feature here. Means I'm going to add a line. This is feature definition. Again, I'm adding a feature line of road jump base, means center line, nothing else. If I got a survey now, rest of center line survey. So this is my center line. So it must have some elevation. I'm giving, don't go on this step, my geometry step. This I will tell you later. I'm doing this for just to make you understand. Yes. So some elevation should be there, no? So how it will create terrain? So this line is now having a survey line. You can say center line, which is brought from survey and which is having some elevation. So I am adding this as a feature to my terrain. Okay, so what it says, locate terrain to add element. Okay, locate terrain. Either you can select the boundary or you can select the terrain. I have selected the terrain. Now it's asking me to locate the element, or you can see here also. And in the bottom, left bottom corner, select element to add the terrain. So element has been selected. Now it is a reset. Reset means right click. Right click. What is it? Break line. Yes, left click. Now this feature has been added it as a terrain. But you will see this triangles which we have deleted came back again. Why? Because now it is not a rule based. है ना? This rule I have deactivated this rule. So अब ये वापस आ गए. अब कैसा करें इसका? हमको तो नहीं चाहिए था ये. तो हम क्या करेंगे? हम इसको बाउंड्री दे देंगे. Add boundary. After deleting these triangles from this terrain, okay. I have deleted now left corner, this upper corner triangle. And I'm adding a boundary to this terrain. Okay. So what it asked me to add a boundary, yes, or add a ruled boundary. See, no, I just want to add a boundary. So to locate terrain, add boundary, left click. Okay, now boundary has been added. Now let's add one more line here. Don't go on this step. I'll tell you these steps separately. Why I have done these steps. I have drawn a plan view of this. Now I'm giving it elevation. Okay, elevation of 900 cell. Yes. Now again, I'm adding this to my model. Okay, now see, you can see I have added this as a boundary. Okay, from here, it's all boundary I have added. Now what is asking me? Locate terrain, terrain located, locate element, element located. Now reset, right click. Break line, yes, break line. It will create terrain using that break line. Okay, but it will not create this, and it will not include even this line because I have added a boundary to that terrain. Okay, if you want to remove boundary, you can either remove boundary. If you want to remove feature, you can even remove feature. Just go to heads of brown, what it says, and do जैसा वो बोलता है वैसा करने का. रिमूव फीचर, हम बस उसको बताना है हमको क्या करना है. हमको रिमूव करना है क्या फीचर, हमने रिमूव किया. अब वो क्या बोलता है वो देख लो. लोकेट टेरेन टू रिमूव. ओके, टेरेन लोकेट कर दिया उसको. और क्या मांगता है वो? लोकेट एलिमेंट टू रिमूव. ओके, दिस एलिमेंट आई वांट टू रिमूव. ओके, अब राइट क्लिक मींस रीसेट. तो रीसेट, सी, he removed this.
line from its feature. It is as simple as that. So now I think we'll move towards geometric design. Some geometry is created. Similar same thing now I'm going to do. I'm in same workspace I'm working. So I'll open a file. Now I'm not creating a file. I have already created a file here. That's why I'm not creating a file. So I'm just opening the existing files only. Geometry I'm opening. For this geometric file, you need a 2D sheet file. Okay. So for now, if I must have created a file here naming geometry, same as this geometry. Okay. तो यहाँ पे मैं अभी सीड फाइल क्या लूंगा 2D, क्योंकि अब मुझे जो भी काम करना है सब 2D में करना है, 3D में नहीं करना है. 3D मैंने एक बार बता दिया उसको करने के लिए, टेरेन बनाने के लिए. एंड इवन इफ 2D एंड 3D डजंट मैटर फॉर ओपन रोड डिजाइनर, 2D बनाओ, 3D ओपन रोड डिजाइनर खुद आपको बना के देता है. दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ ओपन रोड डिजाइनर कि आप 2D बनाओ, वो 3D आपको वो खुद बना के देगा. So now we will create geometry. Some geometry is created in this file already, and some we will create now. So it is as I told, it is a design intent software. So whatever it's know everything, it has a relationship with each other. Each element is having relationship with other element. If you have drawn that in that manner only. See, now just to know you, see, I am annotating this corridor. Okay, this geometry is prepared. This is Mount Highway, this is Pike Road, and this is River Road. Okay, so I will tell you how to create a geometry of River Road. So similar way, this geometry is also prepared. So why I am annotating this, I'll tell you in a minute. See, I'm annotating this, reset to complete. And to use this software, you need a higher RAM speed, you need a good configuration of your laptop or your desktop, so it will work smoothly. Exactly, I don't know how much, but more than 16 GB is more enough. More than 16 GB is required. If you are saying I will use 16 GB only, then it will run slow, थोड़ा सा slow चलेगा उसमें. तो अब यहाँ पे मैंने एनोटेट किया, मतलब देखिए कुछ नहीं किया, सिर्फ उसमें चेनेज वेनेज सब किया था, इसमें सब आ गया अपने आप ऑटोमेटिकली. अब ये सब कैसे आएगा ये मैं आपको बताऊंगा आगे, ज्योमेट्रिक डिजाइन कैसे करेगा. तो टेरेन अपन अब चेंज कर देते हैं इसका मोड. अब अपन टेरेन से ज्योमेट्री में आते हैं. ज्योमेट्री में अब 411 का 411, ओके यहाँ है ना. This is a road. I want to create a road which will start from 1411. Okay, from here. And this is a culvert. I mean minor bridge. The depth of my river. This is the downstream. This is the upstream, or this is upstream, or this is downstream. This is upstream. Whatever you can say. The center line of the river, you can say. So इसके ऊपर से भी रोड लेके जाना है मुझे. And बराबर प्रोफाइल भी मेंटेन करना पड़ेगा उसके ऊपर से जब मैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बनाऊंगा. तो देयर इज अ टूल which is known as civil AccuDraw, which is used to draw the design precisely in your file, जो point to point और design to design आपका वेरी करेगा. प्रोफाइल व्यू में ये अलग रहेगा, प्लान व्यू में ये अलग रहेगा. प्रोफाइल व्यू में ये रहेगा डी जेड, ये सब चीजें. यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्टेंस डायरेक्शन. मीन्स आपको दो चीज लिंक करनी है किसी के साथ. ओके, सो अब मैंने इसको बंद कर देता है एक मिनट. देखिए लाइन बिटवीन पॉइंट्स.
ओके, सो क्या आता है यहाँ पे? कुछ भी नहीं आया। ओके, सिंपल लाइन बनाने बोल रहा है उन्होंने, को मैंने एक लाइन बना दिया। ओके, अभी वाई दिस इज वाइट बिकॉज आई हैव नॉट सेट द फीचर डेफिनेशन. विल सेट द फीचर डेफिनेशन टू geometric display. So now what it will create? It will create a new red color line. Okay, so you must have seen कुछ भी नहीं आ रहा था वहां पे. ओके, ऐसे मैंने लाइन बनाया, ये लाइन में मेरे को हेड्स ऑफ टोन में कुछ दिखा रहे हैं. ये देखिए, इसके साथ एंटर स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा था उसको, और कुछ भी यहाँ डिस्टेंस और यहाँ लाइन डायरेक्शन पूछ रहा है, और कुछ भी नहीं पूछ रहा है. एज सुन एज आई विल स्टार्ट दी एक्यू ड्रॉ, सी वो एक्स वाई पूछ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे अभी एक्स वाई पे हैं. ओके, डी एक्स डी वाई, तो यहाँ पे डी एक्स डी वाई पूछ रहा है. स्टेशन एंड ऑफसेट, स्टेशन एंड ऑफसेट पूछेगा. ओके, सो वी विल यूज स्टेशन, दिस आर आवर स्टेशन एंड ऑफसेट. ओके, सो हमको एक, मेरे को 1411 से शुरू, 411 से शुरू करना है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस स्टेशन एंड ऑफसेट. Again, I'm using this line between points. So station, what is my station? 411 plus 00. Enter. Or I will use tab button. Offset 0. Enter. Okay. Now it will ask me to select. अब स्टेशन तो बोल दिए, लेकिन कहाँ का स्टेशन, किसका स्टेशन? तो रेफरेंस एलिमेंट तो कुछ चाहिए, तो सिलेक्ट रेफरेंस एलिमेट और रीसेट टू रिटर्न टू कमांड. सो आई सिलेक्ट दिस, ये इसका 11 होना मेरे को. एंड अब वो पूछेगा मुझे फिर से 411 प्लस 00. ओके, एंटर. तो उसने ये 411 तक कितने ऑफसेट पे चाहिए? 0. मेरा फर्स्ट पॉइंट है ना. तो वो पूछे कितने ऑफसेट पे चाहिए? 0, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट पॉइंट रहेगा. एंटर. पॉइंट, अब मैंने यहाँ पे भी क्लिक किया तो वो शुरू वहीं से करेगा. ओके, so that's why this is design intent. So now I will use if you know everything then you can do, or if you don't know then you can go simply. अब मुझे एक्स वाई से करना है फॉर एग्जांपल, तो मुझे अब मैंने इसको एक्स वाई पे किया, तो मेरे देखिए हेड्स ऑफ टर्म चेंज हो गए. तो अब मैं एक्स वाई डालूंगा, समझ लो मुझे पता है अगर कोऑर्डिनेट्स, तो मैं डाल दूंगा 2836895. ओके, टैब, then lock, it locks that value, then 1286059. okay, again tab, it will lock. okay, उसमें लॉक कर दिया वो. अब मैं कर्सर कहीं भी घुमा रहा हूँ वो नहीं घूमेगा क्योंकि वो लॉक हो गया है. बस मुझे क्या करना है, लेफ्ट क्लिक एंड द एलिमेंट इज प्रिपेयर्ड. सिमिलरली आप डिजाइनर है, आपको सोचना है कि कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, किस चीज से बनाना पड़ेगा. अब मैंने यहाँ पे क्या यूज किया बनाने के लिए? सिर्फ दो चीजें यूज किया. एक बियरिंग, ओके, एंड दूसरा लेंथ भी यूज नहीं किया मैंने. एक बियरिंग यूज किया और बस उसी से उसने बना दिया, क्योंकि मुझे पता था क्या इतने कोऑर्डिनेट्स तो इतनी ही लेंथ आएगी, और तो लेंथ आ नहीं सकती. तो अगर अब मैं कभी बाद में अपनी, आई विल टेल यू दिस लेटर. We are running out of time, that's why I'm telling you fast. But okay, so now I'll create next alignment. So we'll of this now. You can use this. See, I'm using this. Okay. So now I will use this curve. Similarly, see, curve, arc between element, arc from element. So now this is a single element. So I want to draw arc from element. Okay. But before that, we will draw an arc between element. Okay. So this all you can draw is 2 center arc, 3 center arc. I want to draw simple arc. So these are two elements. I want to draw arc between these two elements. Okay. This is 1 and this is 2. Okay. What dialog box is? Let's see. Okay, you can draw your arc whatever the radius you want. Okay, see, मैंने कुछ रेडियस नहीं डाला है अभी, सिर्फ कट कर दिया उसको. ट्रिम बोथ, यस, ट्रिम बोथ. Okay, you can change from here anytime. 3000 arc will get changed. 3000. Okay.
So now I'm going to draw last alignment. Yeah. Again, simple arc from element. You can draw arc from element there or arc to element. Okay, I will tell you one more. Delete this arc from element. Okay, now it will ask me to start the point. Start. Okay, how much you want radius? Mm, I want radius of 1300. Enter. Okay, now left click. It has locked just radius. Okay, left click. Now it will ask me to lock the length. How much length you want? Now I will say I want the length of 900. Okay, 900 length. Again left click. Okay, frame back. Down arrow, none, back. Only one element is there, that's why. And this is the first one which I have selected, that is back, and the another one is ahead one. In this case, this was back one, this was ahead one. ये selected, ये पहले select किए थे तो ये होगा back, ये बाद में select किए तो ये होगा ahead. आपने बहुत ट्रिम कर दिया. अगर मैं सिर्फ back select करता तो ये ट्रिम हो जाता. ये लाइन आपको अभी भी ऐसे दिखती है यहाँ पे, जो अभी भी दिख रही है. तो back, trim back. Okay. Now line. Now we are having an element, so we'll draw line from element. Line from element. Okay. Locate element. Locate line. Now this is it know that this is a curve, and हम यहाँ से अब हमारी alignment ऐसी तो नहीं जा सकती एकदम curve से, because it's a highway. So that's why it is asking कि आप सीधा ही जा सकते हो, कहीं नहीं जा सकते. तो end distance आपका क्या होगा? So end distance is 1800. Let's enter. Left click. Back. Okay. So now it's a drawn. Now last line we will draw. Okay. Arc between elements. This element, this element. How much radius? I don't want this. Okay. Left click. Okay. Now you can see alignment is prepared. Whole alignment is prepared. But what is this alignment is separate? This element is separate. This element is separate. This is separate. This is all is separated. So we want to connect it to make a one alignment. So I mean we want to complex it. So we'll complex it. Complex alignment. We'll complex by element. We prepared element. We created element. So we'll complex it by element. If हमने PI point of intersection बनाए होते तो हम उससे कनेक्ट करना होता तो उससे करते. हमने ज्योमेट्रिक बिल्डर से बनाए होते तो ज्योमेट्रिक बिल्डर से हम कनेक्ट करते उसको. दिस इज ज्योमेट्रिक बिल्डर. दिस इज अ टूल विच इज सिमिलरली हम उसको यूज कर सकते हैं जैसे मैंने अभी यूज किया वैसे हम इसको यूज कर सकते हैं. बियरिंग पॉइंट एंड ऑल दैट. एक के बाद एक यहाँ पे आएगा ज्योमेट्रिक बिल्डर. अब जैसे कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स करना है यूजिंग ज्योमेट्रिक बिल्डर, बट ज्योमेट्री बिल्डर से उस ज्योमेट्री कैसे बनाना है मुझे नहीं पता. कल सर्च है जियोमेट्री वाले ज्योमेट्री बिल्डर. ओके ज्योमेट्री बिल्डर हॉरिजॉन्टल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री. नो ये वाला नहीं होना. ज्योमेट्रिक बिल्डर एडिट. ज्योमेट्रिक बिल्डर ज्योमेट्री हॉरिजॉन्टल मॉडिफाई. ओके सो हियर बाजू में था वो दिख रहा है. दिस इज ज्योमेट्रिक बिल्डर. ओके सो व्हाट इज आइडेंटिफाई एलिमेंट. मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया एलिमेंट. ओके एक ही एलिमेंट आइडेंटिफाई किया एक्सेप्ट. तो वो एक ही एलिमेंट का पूरा आ गया इसमें. अब मैं इसको करूँगा कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स का एलिमेंट. यहाँ पे दो मेथड है ऑटोमेटिक एंड मैनुअल. मैनुअल मतलब मुझे एक एलिमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा. ऑटोमेटिक मीन्स ऑटोमेटिक पूरे एलिमेंट सिलेक्ट कर देगा. अगर किसी में गैप मैक्सिमम गैप 0.01 से ज्यादा है तो उसको नहीं करेगा, वहां तक के वो लास्ट जाएगा. लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी में 0.01 से ज्यादा गैप होगी. हियर डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैसी अलाइनमेंट आपकी जा रही है. सो सी यू कैन सी डायरेक्शन. सी यू कैन सी डायरेक्शन. आई विल सिलेक्ट दिस.
उसने ऑटोमेटिक पूरा सिलेक्ट कर लिया। ओके, लेफ्ट क्लिक एंड एक्सेप्ट। नाउ यू कैन सी दिस इज होल इज अ ज्योमेट्री। ओके, बट नाउ विल सी कि हमने यहाँ पे कर्व देना भूल गए हैं, अब कैसा करेंगे। सो व्हाट वी विल डू, we will go to geometry and either we can go and do this as a table editor। हम टेबल एडिटर से भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे टेबल एडिटर है, और हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं, ज्योमेट्री बिल्डर से भी कर सकते हैं। विल डू इट बाय टेबल एडिटर। ओके, टेबल एडिटर, वो क्या करता है, जैसे मैं इस पे लेके गया, वो देखो वो यहाँ पे मेरे को बता रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है उसका। तो नेक्स्ट दिस, नेक्स्ट दिस, नेक्स्ट दिस, नेक्स्ट दिस। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बता रहा है रेडियस नहीं है, तो मैं रेडियस दे देता हूँ कुछ इसको, एंटर। आया वहाँ पे, हाँ कुछ तो आया। ये तब तक नहीं आया, डॉटेड में रहेगा, जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तब आएगा। अप्लाई, अप्लाई, अप्लाई। नाउ यू कैन सी वहाँ पे एक कर्व, वहाँ पे एक कर्व ऐड हो गया। ओके, एंड वो कॉम्प्लेक्स ही है ज्योमेट्री, अभी भी बदली नहीं है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट प्रोफाइल ऑफ दिस ज्योमेट्री। ओके, अब हमें प्रोफाइल बनाना था, हम वर्टिकल अब ये वाले टूल्स यूज करेंगे, कुछ टूल्स ऐसे बाकी है यूज करने के हमारे, करेंगे वो हम यूज। बट हम इसको स्टेशनिंग, जैसे इसको स्टेशनिंग दी वैसे इसको भी स्टेशनिंग दे देते हैं, तो हमारे प्रोफाइल यूज करने में काम आएगा वो हमको। तो मॉडिफाई स्टार्ट स्टेशन, व्हाट इट आस्क लोकेट एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज लोकेटेड। नाउ आपको कहाँ से शुरू करना है, स्टार्ट से, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो लेफ्ट क्लिक, स्टार्ट डिस्टेंस 0, लेफ्ट क्लिक। अब स्टेशन क्या चाहिए मुझे, 100। ये 100 प्लस 100, ऐसा 100 के इसमें हो जाएगा। स्टार्टिंग इज, स्टार्टिंग चेंजेस ना 100, लेफ्ट क्लिक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 100 पहले नहीं था, अब ये 100 चेंजेस का नोटिफिकेशन आ गया। ओके, इफ आई एनोटेट दिस, अगर मैं इसको ऐसे ही एनोटेट करता बिना स्टेशनिंग के तो 0 से शुरू करता, अब मैंने इसको एनोटेट करूंगा तो ये 100 से शुरू हो जाएगा। अब मैं इसका एनोटेशन रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अब हम इसकी प्रोफाइल बनाएंगे यहाँ पे। तो वर्टिकल प्रोफाइल का पहले ओपन, जैसा अभी डिफरेंट व्यू टैब्स विच वेयर यू कैन व्यू एवरीथिंग। ओके, अब आपको मैं जैसे ही खोलूंगा आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये टैब में क्या होगा, फिर ये टैब में क्या होगा। ये टैब में जैसे प्रोफाइल दिखेगी, ये टैब में क्रॉस सेक्शन दिखेगा, तो ये टैब में कुछ और दिखेगा, देखिए प्रोफाइल दिखेगी, फिर से अलग अलग प्रोफाइल। तो ये सब टैब्स अलग अलग है, आप उससे देख सकते हैं कि क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। 8 टाइप्स ऑफ टैब्स आर देयर, एक्चुअली दिस सेकंड वन इज फॉर 3D। ओके, सो अब मैं, मुझे इसकी प्रोफाइल देखना है। सो ज्योमेट्री, ओपन रोड मॉडलिंग, ओपन प्रोफाइल मॉडल। ओके, and we'll see, select this plan element, and it is asking me to open view fourth, I want to open it in fourth। okay, fourth में already कुछ तो भी है, but still I want to open it in fourth। so now there are two methods to open the profile, either you can open it from here or you can open it from here also। select the alignment, just hover over your cursor here for a minute and you will see here open profile model। okay, open, now it will ask me to select the view, it's open to view, nothing alignment, this is a ground, this is our terrain, so this is our ground, it is showing me the ground profile। इसके नीचे का ग्राउंड कैसा है वो मुझे ये बता रहा है। अब हमको इसके ऊपर ही तो अपनी प्रोफाइल बनानी है, जैसे मैंने बताया था कि इसको ये दिस इज रिवर और ज्योमेट्री और समथिंग लाइक दैट, हमें इसको इसके ऊपर से जाना पड़ेगा, कलवर्ट है या फिर ये रिवर है, कुछ भी हो सकता है ये, तो हमारी अलाइनमेंट इसके ऊपर जाना चाहिए। ओके, सो विल क्रिएट अवर प्रोफाइल नाउ, सेम सिमिलरली लाइन,
लाइन वी विल यूज नाउ। व्हाट वी विल डू, यहाँ पे ये रोड है, ये रोड पे कॉरिडोर ऑलरेडी बन चुका है ये रोड का, ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद वाला, तो वो बन चुका है कॉरिडोर। तो अब यहाँ पे मुझे वो कॉरिडोर से कैसे शुरू करूँ, तो क्योंकि रोड तो थोड़ा क्रॉस स्लोप तो रहेगा ना कुछ ना कुछ, तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज कट 3D एंड आई विल ओपन दिस एज अ बॉक्स। ओके, नाउ यू विल सी, इसमें जो कॉरिडोर है वो आपको यहाँ दिखेगा, लोड होने में टाइम लेता है। सी, दिस इज द टेम्प, व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई वाज सेइंग, दिस इज द टेम्पलेट, ठीक है। एंड ये सब एग्जैक्ट कॉरिडोर है। ओके, तो ये कॉरिडोर जा रहा है यहाँ पे। तो अब मुझे बनाना है अपना रोड, और मेरा रोड अब यहाँ से नहीं, यहाँ से ऐसा ही होना चाहिए। इसकी प्रोफाइल, इसके रोड से इसकी भी प्रोफाइल, इसका भी क्रॉस स्लोप कुछ ऐसा आ रहा होगा ना इस रोड पे ऐसा, तो मुझे वो मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये ओपन किया एंड क्रॉस चेक किया एंड फिर अपनी अलाइनमेंट बनाना शुरू करूंगा। नहीं तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कैसे बनाएंगे फिर, कैसे नहीं बनाएंगे, इसीलिए। नहीं, इफ आपको नहीं वैसे बनाना है तो आपके पास और एक मेथड है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। पॉइंट ऑफ, यहाँ पे जाएंगे प्रोफाइल क्रिएशन टूल में, अब सब कुछ प्रोफाइल में, प्रोफाइल इंटरसेक्शन पॉइंट, बट उसके पहले मुझे यहाँ पे कॉरिडोर लाना पड़ेगा। कॉरिडोर की फाइल इसमें है या नहीं है, मुझे वो देखना पड़ेगा पहले। और जैसे जैसे हमने टेरेन की फाइल डीजीएन फाइल अलग बना के रख दी है, वो उसमें अटैच की है, ठीक है। फिर हमने सेंटर लाइन की अलग एक डीजीएन फाइल बनाया, वो अब हम किसी और में अटैच करेंगे। फिर हम वैसे एक हर एक के लिए हम अलग अलग फाइल बनाएंगे, कॉरिडोर के लिए अलग। तो हमारी ये 2D, हमारे 2D प्लान में देखते हैं आके कि कॉरिडोर फाइल, यस कॉरिडोर फाइल इज अटैच बट नॉट डिस्प्ले। ओके, तो मैं इसका डिस्प्ले ऑन कर देता हूँ, तो यू कैन सी दिस कॉरिडोर इज नॉट अटैच्ड हियर। ओके, सो दिस कॉरिडोर इज नॉट अटैच। तो यहाँ पे इम्बैकमेंट है, इस साइड इम्बैकमेंट नहीं दिया उन्होंने, उनको पता था कि यहाँ से रोड आने वाला है, ऐसा कुछ होगा कुछ भी। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे पॉइंट क्रिएशन, प्रोफाइल, ये सब प्रोफाइल व्यू में इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, तो इंटरसेक्शन पॉइंट इसका इसके साथ, ओके सी, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। ओके, अब अगेन इंटरसेक्शन पॉइंट इसका इसके साथ, इंटरसेक्शन पॉइंट इसका इसके साथ, तो सी दूसरा पॉइंट आ गया। सेम वही, अब हम यहाँ पे इससे लाइन बनाएंगे, तो लाइन से आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है वो, क्यों बनाया अपन ने वैसा। ओके, सी, दिस हैज अ स्लोप ऑफ 2.27, जो अपने अप्रॉक्स लोग रहते हैं 2.5 2.5 के, एंड 12 फीट का रोड है। 12 फीट मीटर्स में कर लीजिए, कुछ 3 पॉइंट आएगा, एक लेन हमारे 3.5 3.65 की रहती है, विथ क्रॉस स्लोप ऑफ -2.5। तो ये दिस इज करेक्ट। एग्जैक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने एग्जैक्ट स्नैप नहीं किया है, ना तो मैं जल्दी में। तो मैं थोड़ा अच्छे से स्नैप करूँगा। ओके, सो नाउ टू स्नैप। ओके, सो अब मैं आपको क्रिटिकल पॉइंट्स बताऊंगा बस यहाँ पे, कि प्रोफाइल क्रिएट करने में मेन एक्यू ड्रॉ कैसे काम आता है, कैसे यूज होता है हमें। अब जैसे इसके बाद भी हमारी प्रोफाइल एकदम से ऐसी है, एकदम से ऐसी तो नहीं जा सकती, हमारी लाइन थोड़ा सा प्रोफाइल लाइन फ्रॉम एलिमेंट, तो वो टेंजेंट ही जाएगी, इससे टेंजेंटली ही जाएगी एग्जैक्टली तुरंत इससे। क्रॉस स्लोप यहाँ का इसका -2.5 है, तो इसका -3 या +3 तो नहीं दे सकते नेक्स्ट लाइन का, हमें वैसा ही देना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये प्रोफाइल लाइन फ्रॉम एलिमेंट एंड टेंजेंट प्रोफाइल लाइन फ्रॉम एलिमेंट यूज कर रहे हैं। ओके, सो ये एलिमेंट हमने सिलेक्ट कर लिया, जैसा वो बोलता है वैसे ही करने का वो, ठीक है। अब देखिए,
again. Okay, pick up complex element, हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। ठीक है, देखिए उसका स्लोप वो बराबर 2% मेंटेन ही करेगा। मैं ऊपर करूंगा कर्सर, नीचे करूंगा तो भी कुछ नहीं करके देगा वो। क्यों? क्योंकि मुझे मेंटेन करना है इसके साथ इसका स्लोप। तो मैंने कहाँ तक मेंटेन करना है एज अ डिजाइनर, वो मेरी ऊपर है, मेरी इच्छा। मैं कहाँ तक उसको, मैं पूरा उसको मेंटेन करूँ या फिर हाफ ऑफ द अलाइनमेंट तक मेंटेन करूँ, मुझे जहाँ तक करना है मैं यहाँ तक करता हूँ। ओके, देन यहाँ से नेक्स्ट आई ड्रॉ डिफरेंट लाइन which will draw up to here. Okay, अब यहाँ हम आते हैं फिर से सिविल एक्यूड्रो में। सिविल एक्यूड्रो यूज किया मैंने। अब हम प्रोफाइल व्यू में, ठीक है, जैसे हम ये व्यू में रहते हैं तो ये टैब एक्टिव रहता है, ये व्यू में रहते हैं तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसके प्रॉम्प्ट चेंज हो गए हैं एक्यूड्रो में। अब ये DZ Z इसके रिस्पेक्ट में चलेगा। ओके, सो व्हाट वी वांट, आई नीड प्रोफाइल ऑफसेट। मुझे मेरी प्रोफाइल इसके ऊपर चाहिए। ओके, स्टेशन एंड प्रोफाइल एंड ऑफसेट। अब स्टेशन एंड प्रोफाइल इसलिए मैंने इसको स्टेशन दिया, तभी वो समझेगा। यहाँ पे देखिए स्टेशनिंग बराबर 100 से शुरू होगी जाएगी। ओके, तो अब हम यूज करेंगे DZ, सॉरी से एस्केप की। सी नाउ आई वांट टू मेंटेन माय प्रोफाइल इसके ऊपर। दिस इज द पॉइंट वेयर माय इंटरसेक्शन। अभी हमको फिर से लोकेट करना पड़ेगा ना कि कौन सा पॉइंट है, वो कहाँ है। तो सेम हियर, फर्स्ट ट्रेवल दिस ऑफ प्रोफाइल क्रिएशन इंटरसेक्शन दिस पॉइंट विद दिस। ओके, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब मुझे करना है कि मेरी प्रोफाइल यहाँ पे इसके ऊपर रहे। ओके, तो आई ड्रॉ लाइन हियर नॉर्मल। ओके, अब यहाँ पे जो मेरा कर्व आएगा वो कर्व मेरा इस पॉइंट से 25 मीटर्स ऊपर रहे, 25 फुट ऊपर रहे। आई वांट दिस, सो अगेन वी विल, इसीलिए वो एक्यूडो यूज आएगा हमको। DZ Z Z यूज करेंगे तो कुछ और हो जाएगा, DZ यूज करेंगे तो कुछ और हो जाएगा। स्टेशन एंड Z वैल्यू, स्टेशन एंड DZ वैल्यू। Z वैल्यू मीन्स किसी एक चीज से, DZ मीन्स आपको कुछ रेफरेंस देना पड़ेगा उसको। सो सॉरी, हम यहाँ लाइन में, हम यहाँ कर्व बनाएंगे, कर्व बिटवीन एलिमेंट्स, सिंपल पैराबोला कर्व। सिलेक्ट वन एलिमेंट, सिलेक्ट अनदर एलिमेंट। नाउ इट इज आस्किंग मी, सी अब मैं ये चेंज कैसे कर रहा हूँ यूजिंग टैब। ओके, सो स्टेशन, आई विल स्नैप हियर स्टेशन 159.23. Okay, then again I will go to DZ, then I'll press O. Then it is asking me to add a reference point, which is a reference point. So this is my reference point. अब यहाँ पे 0 कर देगा DZ को. Okay, again I am using this tab 159.23. Enter. Locked this tab and this is what 25. Enter. Okay. O. Select station. Station select. O, reference point is also selected. Then 159.23
2 3 snap is at 25. आ क्यों नहीं रहा है? See 25 तो हो गया है. You can see here. It is maintaining 25 meters above. One, station is 159 point plus 23 tab. This is a 0. Please admit this is a 0. From here we want to go up 25 meters. Okay. And then again O. This is a reference point. 59 plus enter 25 enter. Okay. Now see this point is okay. ये point यहाँ से 25 मीटर ऊपर है. Okay. Accepted. And now trim both. मैं ये ऑफ कर देता हूँ. बटन खराब है. Now we will see. Now this is design intended. Okay, इसको ये पता है ये 25 मीटर अपनी अलाइनमेंट उससे ऊपर ही रहनी चाहिए. ठीक है. अब मैं इसकी प्रोफाइल खोल देता हूँ. इसकी प्रोफाइल मैंने ओपन किया 7 में. ओके. हियर यू कैन सी इसका कुछ एलिवेशन होगा ही. ऑफ कोर्स वो सर्वर डेटा से आया है तो सी इसका एलिवेशन है 7300. अब मैंने इसका एलिवेशन चेंज कर दिया 7320. ओके. So now this point will go up plus my alignment will maintain a distance of 25 meters with it. क्योंकि ये point को मैंने snap किया था. Okay. So this is what I am telling. This is a design intended. So एक दूसरे के साथ relationship maintain करके चलते हैं जो काफी जरूरी है. So back to this. हम इसको वापस कर देते हैं 7300 पे. Okay. So this is a brief of horizontal and vertical alignment. Rest of alignment you can draw. You need to अब इसको complex करने के लिए same complex profile by element same complex करना modify. इसमें अब stationing नहीं आएगी क्योंकि हमने stationing यहाँ देख चुके हैं. Append means see मैंने complex कर दिया इसको यहाँ से. Okay, this alignment has got accept complex. But oh I forgot कि ये एक छोटी सी लाइन थी यहाँ पे जिसको मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं किया इसके साथ. Okay, so this is used to append my profile. Okay, so it will ask me select complex element. Complex element is selected. Now select element to make it add. This added. Okay, added. Okay, अब देखेंगे अब इसके साथ append होगा. So these are the small tools. Constant profile by elevation. अब मैंने कुछ रोड बनाया उसकी elevation आपको पता है तो आप उसको elevation constant profile by elevation आप दे सकते हैं. These are the different methods you can use to create a profile element. किस profile elements. And now we are heading this time. So we'll go to the next topic, corridor. Okay. Again same. I have some alignments design. I just want to appoint a corridor to that. जैसे हमने ये alignment बनाया वैसे मेरे पास वो alignment है already बनी हुई. अब मुझे उसको corridor देना है सर. Okay. So corridor is nothing but you can say
corridor model allows to users to create a dynamic, intelligent, and powerful 3D model to their design. This 3D model mesh and all this embankment and all that. The 3D model is then used to create cross section, terrain model and generate corridor quantities. Okay, this quantity corridor के बाद ही हम सब कुछ कर सकते हैं. हम उसके बाद ही प्लान एंड प्रोफाइल नहीं बना सकते हैं. हम उसके बाद ही टेरेन क्रॉस सेक्शन चेक कर सकते हैं एंड हम उसके बाद ही प्लान एंड प्रोफाइल तक के पहुंच सकते हैं. Corridor is created first in 2D by assigning a horizontal and vertical alignment to the corridor. मेन रिक्वायरमेंट होती है कॉरिडोर क्रिएट करने के लिए टेरेन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट. बस ये तीन चीजें चाहिए होती है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है कॉरिडोर बनाने के लिए. एंड दिस इज अ टेम्पलेट लाइब्रेरी जो मैं बताऊंगा आगे. टेम्पलेट लाइब्रेरी भी जरूरी होती है बट वो कोई डीजीएल फाइल नहीं है जो आपको इतनी जरूरी है. वो एक सिर्फ आईटीएल फाइल है. जैसे 3D असेंबली मैंने बताया आपको, एक सिविल 3D में असेंबली होती है, वही हमारा यहाँ पे टेम्पलेट्स बोला जाता है उसको. और डिफाइनिंग इंटरवल अलोंग द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. Once the template is assigned to the corridor, a 3D model is created. Okay. A template represents the transverse geometry or typical section along the corridor. Okay. Templates are made up of points. Okay, this templates जो है, templates के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ये next पर आप छोड़ दीजिए. Template is itself a very big topic. So जैसे Civil 3D में Civil 3D सिखाते हैं and assembly create करना is a different part. Okay, so similarly template is a different topic which I am going to cover soon in my next webinar and उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा. So, here is my alignment. Some center lines I have drawn through 2D में देख सकते. 3D view मैं right click किया, 3D view, nothing is here. Now I will create a corridor here. Okay, from terrain geometry to corridor. First, then I will import a template here. Okay, this templates which I was saying. What is templates? Okay, I'll import I have a template file which is an ITL file. Okay, this is an ITL file which I got it with, which you will also get with software, and everyone gets it. So you can create your own template, or you can use that template only which you get with software. Okay, so okay, so I have just imported this. Now I want to. This is my London road. Whatever the name of this road is, I gave it a London road. Okay, so this is a road. We want to give a corridor here. Okay, so new corridor. Okay, what this says, locate corridor baseline. This is my baseline. Okay, locate profile, reset for active profile. Yes, reset because this profile is active. And name is London Road, left click accept. Okay, now this corridor has been assigned. Now it is asking me corridor तो हो गया, अब कौन सा टेम्पलेट देना है उसको आपको भैया. टेम्पलेट तो बताना पड़ेगा ना कुछ उसको. तो आई वांट टू गिव, मैंने जो टेम्पलेट लाइब्रेरी ऐड किया था उसमें से ही टेम्पलेट देना पड़ेगा. आई वांट टू यूज दिस टूल इन प्लस टर्न लेन रूलर. ओके ओके, इस टूल इन टू टर्न लेन यहाँ से मैं क्लिक करके गया. लेफ्ट क्लिक एक्सेप्ट. कहाँ से कहाँ तक देना उसको, ये कॉरिडोर आपको. मुझे यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू अप टू हियर ओनली आई वांट टू गिव. ओके, यहाँ तक के मुझे देना है. तो उसने बराबर अपने लॉक कर दिया. 50 यहाँ से 50 था, यहाँ पे 62 था. ड्रॉप इंटरवल विल बी 50. लेफ्ट क्लिक. Now it is assigning corridor to this much section only. मेरी थोड़ी स्लो है रैम, तो इसलिए टाइम लेगा. Now you can see in 3D और इस पे कॉरिडोर असाइन हो गया सेंटर में.
अब मुझे कुछ और फाइल्स अटैच करनी है मेरे इसमें, जो मैंने क्रिएट करके रखी थी, जैसे तो नहीं, ज्योमेट्री ROW, ज्योमेट्री कंट्रोल, कॉरिडोर, इसका ब्रिज का, अब ये सब, ये ब्रिज वाली फाइल से सब स्टेट प्रो से आई है। ओके, DWDGN फाइल स्टेट प्रो से आती है। और ओपन ब्रिज एक नया सॉफ्टवेयर है बेंटली का, आप उसमें भी स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। ओपन फ्लो इज आल्सो सॉफ्टवेयर, न्यू सॉफ्टवेयर, इंस्टेड ऑफ वाटर यू कैन यूज ओपन फ्लो। सो ये सब फाइल मुझे अटैच करनी है उसमें। सो ओपन, सबके लिए पूछेगा कोइंसिडेंट वर्ल्ड और रियल्टर को डिटैच करना है ही नहीं। सी नाउ एवरीथिंग इज देयर बट इन रेफरेंस फाइल। ओके, सो मुझे हर चीज तो नहीं देखनी है, ब्रिज भी नहीं देखना है, टेरेन होना। ओके, कॉरिडोर, ओके, यू कैन सी, यहाँ तक के ये मैंने हेड प्रॉम्प्ट दिए हैं यूज करने के लिए मेरे लिए ही। एंड ऑफ रूलर टेम्पलेट एंड स्टार्ट ऑफ रूल, तो स्टार्ट ऑफ अर्बन टेम्पलेट। सो अब यहाँ पे मैं टेम्पलेट को मूव भी कर सकता हूँ आगे तक के, इफ आई फॉरगॉट तो मैं यहाँ तक के इसको मूव करूँगा तो ये टेम्पलेट यहाँ तक के मूव हो जाएगा। ओके, आफ्टर हियर आई वांट टू यूज द अर्बन टेम्पलेट, टूल इन अर्बन टेम्पलेट। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गिव अ न्यू टेम्पलेट ड्रॉप। ओके, नाउ व्हाट इट सेज, लोकेट कॉरिडोर। ठीक है, अब मैंने कॉरिडोर क्रिएट किया था तो ये कॉरिडोर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, दिस इज द कॉरिडोर एंड कॉरिडोर हैंडल्स, and this purple dotted line is a template line. Okay, so I want to give a new template drop, locate corridor, this is corridor. Okay, now which template drop you want to use, I want to use the urban one. Okay, okay, left click to effect, from where you want to use, from here to, I want to use up to last. Okay, here, now interval same 50. Now you can see here corridor will be assigned. Okay, सिमिलरली इस वाले जो रोड का कॉरिडोर था, सेंटर लाइन थी, कॉरिडोर था, वो सब रेफरेंस में है। ठीक है, इसीलिए इसका दिखा रहा है। अगर इफ मैंने इसका कॉरिडोर, अब यहाँ पे हम इस, सी, अटैचमेंट वाली जो फाइल रहती है वो 2D के लिए अलग रहती है, 3D के लिए अलग रहती है। आपको अटैचमेंट 3D से अलग करना पड़ेगा, 2D से अलग। अब 3D में ये दिखा रहा है, मैं फिर 3D में जाऊंगा, फिर 3D में सब मैंने अभी इसको सब डिसिलेक्ट किया था, फिर से डिसिलेक्ट करना पड़ेगा। सी, ओके, तो वो इसमें से भी डिसिलेक्ट हो गए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे जो जो चाहिए मैं उससे बोल रहा हूँ। अब और क्या बता सकते हैं इसमें कॉरिडोर में, और यस, हमको टेम्पलेट टेम्पलेट ड्रॉप देना है, एडिट टेम्पलेट ड्रॉप। ओके, सो दिस इज अ टेम्पलेट, दिस इज अ डिफरेंट टेम्पलेट फ्रॉम दिस चेनेज टू दिस चेनेज, एंड यहाँ से यहाँ तक के हमने दूसरा टेम्पलेट यूज किया है। अब हमें एक नया टेम्पलेट ड्रॉप देना है, एडिट टेम्पलेट ड्रॉप। ओके, सो इट विल अगेन लोकेट टेम्पलेट, नहीं, हम टेम्पलेट ड्रॉप नहीं देना है, हमें पहले एक और न्यू टेम्पलेट ड्रॉप देना है। ओके, जैसे हमने यहाँ पे एक टू लेन प्लस रूलर वाला बना है, ऐड किया, टू लेन प्लस टर्न लेन प्लस रूलर। ओके, फिर टू लेन प्लस टर्न लेन प्लस अर्बन। ओके, सो मुझे यहाँ पे अब इतने सेक्शन में यहाँ पे ड्राइव आ रहा है। ओके, तो इतने सेक्शन के लिए मुझे अलग टेम्पलेट ड्रॉप बनाना है, बट रहेगा वही, टू लेन प्लस टर्न लेन प्लस अर्बन रहेगा वही, बट मुझे सिर्फ उसको डिवाइड करना है इन दोनों के लिए, क्योंकि मैं उतने टेम्पलेट को फिर और एडिट करने वाला हूँ आगे, फ्रॉम यूजिंग दिस एडिट टेम्पलेट ड्रॉप। तो मुझे सिर्फ इतने, इसको पहले इसको अलग टेम्पलेट देना पड़ेगा। ओके, सो आई यूज दिस न्यू टेम्पलेट ड्रॉप, लोकेट कॉरिडोर, आई यूज दिस हैंडल्स,
एंड क्या रहेगा मेरा, वही रहेगा टेम्पलेट, मुझे कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ इस सेक्शन में हमने अर्बन वाला दिए थे तो हम अर्बन ही रखेंगे। ओके, अर्बन ही रखेंगे। कहाँ से, अब यहाँ पे देखना आपको चेंजेस दिखेंगे। ओके, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ। ओके, interval will be 10. This is a small span, so I will give it interval 10. Left click. See, you can see here, यहाँ पे टेम्पलेट ड्रॉप आया आपकी जस्ट। ओके, इतना। जिसके हैंडल्स अलग हो गए। अब आपके पास तीन टेम्पलेट्स हो गए। एक यहाँ, तीन सॉरी नहीं, टेम्पलेट डिवाइड्स हो गए अब सब। यहाँ से लेके यहाँ तक एक अर्बन टेम्पलेट हो गया। ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक सॉरी रूरल टेम्पलेट हो गया यहाँ तक। फिर यहाँ से आपके पास आगे एक अर्बन हो गया। ओके, फिर अर्बन में यहाँ पे भी एक अर्बन हो गया, एक दूसरा अर्बन। फिर यहाँ से आगे तक तीसरा अर्बन। ओके, टाइप ऑफ टेम्पलेट्स आर टू, अर्बन एंड रूरल, बट द सेक्शंस आर डिवाइडेड इन 1, 2, 3 एंड 4, लास्ट वाला। ओके, जिसमें से ये तीनों एक ही टेम्पलेट है, टू लेन प्लस टर्न लेन प्लस अर्बन। सो नाउ आई वांट टू एडिट दिस टेम्पलेट। ओके, अब उससे पहले मैंने एक कॉरिडोर डाल दिया, इस पे कॉरिडोर बना दिया। बट यू कैन सी हियर इन दिस व्यू कि यहाँ से भी एक रोड आ रही है। ओके, जिसमें यहाँ पे एम्बैंकमेंट है, ये रोड है, शोल्डर है, जिसकी सेंटर लाइन मेरे यहाँ तक की आई है। ओके, यहाँ तक है, इसके सेंटर लाइन तक है। तो अब मुझे चेंज करना पड़ेगा, मेरा कॉरिडोर जो ऐसा जा रहा है यहाँ से, ठीक है, देखिए ऐसा जा रहा है कॉरिडोर, ठीक है, ये एम्बैंकमेंट उसके अंदर है, बट आई वांट कि मेरा कॉरिडोर यहाँ से ऐसा अंदर हो जाए, इस मैच लाइन को मैच करें एंड देन अगेन बाहर हो जाए, और इस मैच लाइन तक के मेरे कॉरिडोर में कुछ नहीं रहे, इसके इस साइड। तो व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड दिस मैच लाइन एज अ कॉरिडोर रेफरेंस टू माय कॉरिडोर। ओके, सो जिससे यहाँ पे आप देखिए कि चेंज क्या होगा एंड क्या चेंज होगा, उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब ये मैच लाइन मैंने कैसे बनाया, ये कुछ नहीं, जैसे हम ज्योमेट्री बनाते हैं उसमें बस फीचर डेफिनेशन मैंने इसकी यहाँ पे मैच लाइन दे दिया था। ओके, you can see here alignment, linear, miscellaneous, match line. Okay, this is a match line. No. Okay, so corridor reference, add corridor reference. अब see again it's asking me to locate corridor, locate first reference. Okay, and reset to complete. Reset means right click. Okay, it will do the process. And see, इतना पोर्शन कट कर देगा। ठीक है, अब जब मैं यहाँ का कॉरिडोर डालूंगा एंड यहाँ पे जो सब कुछ बना होगा इस रोड के लिए, तो बराबर इसको मैच करते हुए आएगा, इस सबको यहाँ पे और टेपर कर दूंगा थोड़ा सेक्शन। तो दैट इज अ डिजाइन, दैट इज वो डिजाइनर को सोचना है, मीन्स आपको सोचना है। ओके, तो अब यहाँ पे आ गए हम सिमिलरली। अब जो मैंने यहाँ पे किया वही मैं एक दूसरे वे से करना चाहता हूँ। वैसे मैच लाइन मेरे पास यहाँ पे भी है। ओके, यहाँ पे बट मुझे मैच ये जो यहाँ से मैच लाइन, ये एज ऑफ शोल्डर, एज ऑफ पेमेंट है, ईओपी, मुझे यहाँ से नहीं, मुझे थोड़ा यहाँ से चाहिए इसका। ओके, या फिर मुझे कर्व चाहिए, तो मुझे इसको अलग वे से एडिट करना है, इसीलिए मैंने ये एडिट टेम्पलेट ड्रॉप किया। ओके, इतने सेक्शन के लिए। अब now you will see why I have done this. ये सेक्शन है। ओके, मैं यूज एडिट टेम्पलेट ड्रॉप, मुझे सिर्फ इतना ही, ये ड्राइववे के पास जो आ रहा है उसको एडिट करना था, इसलिए मैंने इसको पहले न्यू टेम्पलेट ड्रॉप, इसलिए इसको टेम्पलेट वही रखा है, बस उसको कट कर दिया मैंने अलग अलग सेक्शंस में। जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो वो मुझे उस का जो टेम्पलेट है उस टेम्पलेट्स में लेके जाएगा, जो है टू लेन प्लस टर्न लेन प्लस अर्बन, which is this one. Okay, so now I want to delete something from here. Okay, so मुझे I will right click, delete component, मैं कर्सर लेफ्ट क्लिक करके जहां जहां जिस जिस कर्सर से इसको लेके जाऊंगा वो सब डिलीट करेगा वो। ओके, डिलीटेड। तो मुझे यहाँ तक डिलीट करना है, ये कर्व हाइट मुझे डिलीट नहीं करना है। ओके, क्योंकि ये कर्व हाइट मुझे मेंटेन करना है इस रोड के लेवल के साथ,
जो उधर ड्राइववे गया ना, ऐसे ड्राइववे जाएगा, तो उस ड्राइववे के साथ मुझे कर्व मेंटेन करना है, इसलिए मैं कर्व कर्व डिलीट करूंगा मैं, तो ये पूरा सेक्शन डिलीट हो जाएगा, दिस होल सेक्शन इज कर्व। इस कर्व, इस मैंने ये कंपोनेंट के ऊपर से लाइन लेके गया तो ये पूरा कंपोनेंट ही डिलीट हो जाएगा। बट मुझे डिलीट नहीं करना है, मुझे सिर्फ इसकी हाइट कम करनी है। वो हाइट भी अपन कम कर सकते हैं, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, वो मैंने नेक्स्ट स्टेप में वही बताऊंगा आपको, इसकी हाइट कैसे कम करें। बट अभी मुझे क्या चाहिए, उस ड्राइववे वाले एलिमेंट पे, जो एलिमेंट ड्रॉप दिए थे हमने, वहां पे मुझे क्या चाहिए, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। ओके ओके, नाउ इट इज प्रोसेसिंग, नाउ यू कैन सी वहां पे क्या हुआ हुआ। हाँ, सी उतना सेक्शन में चले गया, बट स्टिल यहाँ पे कर्व है, शोल्डर है, कर्व की हाइट है, सब है। अब व्हीकल यहाँ से कैसे जा पाएगी, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी हाइट कम करनी है कर्व की, इस कर्व की। सो आई विल यूज पैरामेट्रिक कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये सब एडिट कर, अब हम कॉरिडोर में है तो हमने क्रिएट किए पहले कॉरिडोर इन दो मेथड से। ठीक है, सेम चीज अगर मुझे कॉपी करना है, ये टेम्पलेट ड्रॉप, आई विल कॉपी दिस टेम्पलेट ड्रॉप। सो टेम्पलेट ड्रॉप कॉपी, लोकेट कॉरिडोर, लोकेट द कॉरिडोर, एंड कहाँ कॉपी करना है, एक और ड्राइव है मेरा बाजू में, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, सो इट इज प्रोसेसिंग एंड यू कैन सी बाजू में भी कट हो गया है। ओके, अब मुझे इसकी हाइट कम करनी है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल एड पेरीमेट्रिक कंस्ट्रेंट। ठीक है, पेरीमेट्रिक कंस्ट्रेंट, लोकेट कॉरिडोर, कॉरिडोर। ठीक है, अब वो बोलता है कहाँ से कहाँ तक। पैरामेट्रिक कंस्ट्रेंट मींस आप उस चेन एज से उस चेन एज के बीच में, एक्स चेन एज से वाई चेन एज के बीच में आपको जो चाहे आप चेंज कर सकते हैं, यूजिंग दैट इन दैट कॉरिडोर। उस इस चेन एज से इस चेन एज के बीच में जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर में जो कुछ भी आ रहा है आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब कॉरिडोर में क्या क्या आ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने चेन एज से चेन एज सिलेक्ट कर लिया। अब इस कॉरिडोर के बीच में क्या आ रहा है, कट, फिल, टेम्पलेट है तो टेम्पलेट में बहुत सारी चीजें रहती है, शोल्डर, कर्व, कर्व हाइट, कर्व ऑफसेट, ये सब पॉइंट से बने हैं। ठीक है, पॉइंट फीचर एंड लीनियर फीचर, जो मैंने बोला था कि टेम्पलेट का एक अलग टॉपिक ही है टेम्पलेट, जो मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा। तो मुझे अब इसकी कर्व की क्या हाइट करनी है, एंड दिस इज राइट साइड कर्व। ठीक है, तो आई विल सिलेक्ट दिस कर्व, राइट साइड टाइप हाइट। ओके, कर्व एक ही टाइप के कर्व यूज किए हमने, कर्व टाइप 1, कर्व हाइट राइट। ओके, सो एग्जिस्टिंग हाइट इसकी कितनी है, 0.5। ओके, यू कैन सी हियर एग्जिस्टिंग हाइट इसकी 0.5 है। मुझे अब इसको चेंज करना है, 0.1 इंच करना है, 0.083। ओके, टैब 0.083। ओके, एंटर। सो नाउ नीचे आके, ये यहाँ करने से कुछ नहीं होगा जब तक मैं खुद बताऊंगा नहीं इसको। अब नीचे आके मुझे सिलेक्ट, वही चीजें नीचे आएगी मेरे एरो, मेरे कर्सर के साथ। तो मुझे लेफ्ट क्लिक, again left click, again left click, it will process and you will see this curve height will be changed to from 0.5 to 0.083। okay, see curve की height change हो गई from 0.5 to 0.083। similarly हम इसका भी कर सकते हैं। ओके, अब लास्ट थिंग, यहाँ पे एक हम कॉरिडोर रेफरेंस कर देते हैं, दिस कॉरिडोर एंड दिस इज फॉरेस्ट लाइन। ओके, now you will see this section is tapered। ओके, ये कैसे आया, ये एक लाइन, दिस इज वही ज्योमेट्री आपको बताया आर्क कैसे बना। ठीक है, सो दिस सेक्शन इज टेपर्ड। ये कैसे टेपर्ड बना है, इन्होंने ये वाला ऑप्शन यूज करके। ओके, दिस टूल इज योर वर्क, आई एम नॉट गोइंग टू टेल दिस इन ज्योमेट्री, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मैंने जिनको वेबिनार किए उन्होंने कुछ प्रैक्टिस की भी कि नहीं। ये आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी।
and you will contact me. So this section is very easy. You have to do it by yourself. This is an offset. Center line is drawn. After center line, what you want to do is edge of payment, edge of shoulder, 3.5 this side, 3.5 this side, फिर 1.5 का shoulder this side, 1.5 का shoulder this side. So this you can draw. उसके बाद ये taper होना, full tapered होना या partial tapered होना. Okay. फिर ratio में चाहिए कुछ 1:4, 1:5. तो ये ratio. These are the four different steps जो से आप अपना beyond center line you can draw. Okay. So this is your work. I will not tell this. So ये लाइन वैसे ही बनी गई है, edge of payment जो है. Okay. So now what I will do, I will okay. Now we will add this again. See, I'm adding this tapered section as a reference to our corridor. Okay. This tapered section. This one. Before that, I want कि मुझे टेम्पलेट ड्रॉप देना है यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि मुझे और भी कुछ चेंजेस करना पड़ सकता है इस चेंजेस के बीच में. तो मैं सोच रहा था कि मैं इसको एक टेम्पलेट ड्रॉप दे दूं. तो मैं न्यू टेम्पलेट, लोकेट कॉरिडोर, यहाँ पे मैं टेम्पलेट चेंज करना चाहता हूँ. मैं अपना टेम्पलेट देना चाहता हूँ 2 लेन प्लस ऑक्सिलरी लेन प्लस लेफ्ट. ठीक है, ये लेफ्ट साइड है इसलिए लेफ्ट वाला. ओके. अब इसमें ये क्यों ऐसा चेंजेस है, क्या चेंजेस है, मतलब टेम्पलेट वाला बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ओके. सो लेफ्ट क्लिक एक्सेप्टेड. कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 20. लेफ्ट क्लिक. तो मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट ड्रॉप दे दी, क्योंकि मैंने इसलिए दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और भी चेंजेस कुछ करने पड़ सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. सो यहाँ पे अब ये यहाँ से ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हट चुका है. क्यों हट गया, उसके लिए मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कुछ. एक टेम्पलेट, ये जो टेम्पलेट हमने यूज की ऑक्सिलरी ले, ठीक है, ये टेम्पलेट है वो. ओके. अब इस टेम्पलेट में क्यों ऐसा हुआ है, ये पॉइंट जो है वो ये पॉइंट वहां का सिलेक्ट करेगा जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी. ओके. अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इस पर डबल क्लिक किए. वेट, मेरा कुछ सॉफ्टवेयर, मेरा लैपटॉप इतना हाई कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है, इसलिए थोड़ा मैंने डबल क्लिक किया तो ये सब इसकी पॉइंट की, उस पॉइंट की प्रॉपर्टीज है. ये जब हम टेम्पलेट वाला वेबिनार करेंगे तब उस पर आपको सब क्लियर हो जाएगा. बट जस्ट अभी, जस्ट टू नो यू आर इंजीनियर, सो मुझे टेस्ट करेंगे हम इस पॉइंट को, टेस्ट हॉरिजॉन्टली. तो सी यहाँ पे एज में एज एंड कंडीशंस है उसको, शोल्डर्स भी है उसको, बट इट इज नॉट विजिबल हियर. ठीक है, वो क्यों विजिबल नहीं, हमने उसको फ्लोटिंग रखे हैं. ठीक है. अब उस पॉइंट को नो, इसलिए वो यहाँ से कट गया है क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ उसको रेफरेंस दिए नहीं है. अब यहाँ पे जब हम रेफरेंस देंगे तो अपने आप आ जाएगा. अब मैं इसको रेफरेंस दूंगा, कॉरिडोर रेफरेंस. ओके. सो लोकेट कॉरिडोर, दिस and this as a reference, reset. You can see this section is tapered now. Okay. Just learn the process. Don't go on values or something like that. आपको प्रोसेस लर्न करना है यहाँ पे. सो देखिए ये सेक्शन इतना टेपर्ड हो गया विथ रेफरेंस टू दिस. सिमिलरली हम इसको भी टेपर कर सकते हैं. इस साइड भी एक टेपर सेक्शन है हमारा, उसको भी टेपर कर सकते हैं. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ वी विल क्रिएट अ सुपर एलिवेशन. ठीक है, और असाइन अ सुपर एलिवेशन टू दिस कॉरिडोर. ठीक है, बट बिफोर दैट आई वांट टू शो यू क्रॉस सेक्शन, डायनामिक क्रॉस सेक्शन. सी
this tool, review dynamic OpenRoads. Okay, so locate corridor, it is saying कॉरिडोर लोकेट कर दिया. ओपन व्यू कौन से व्यू में देखना चाहेगा, ये देखना चाहेगा. अरे ओके, अगेन सो ये हमें क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है. ओके, हम इसका एग्जैगरेशन चेंज कर सकते हैं फ्रॉम 10 to 5. यू कैन सी क्या चेंजेस होता है. ठीक है, अब राइट क्लिक किया मैंने. ये राइट क्लिक करने के बाद बहुत सारे इसमें ऑप्शंस है जो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. मैं मेरी ईज के लिए आपको समझाने के लिए जो यूज कर रहा हूँ वो लोकेट स्टेशन वाया डेटा पॉइंट. ओके, अब ये मैंने 52 चेंजेस का देख रहे हैं हम लोग. ठीक है, क्रॉस सेक्शन मैंने अब मुझे अब देखना है किसी और चीज इसका क्रॉस सेक्शन कोई और चेंज का. सो मैंने राइट क्लिक लोकेट स्टेशन वाया डेटा पॉइंट. अब वो बोलता है सिलेक्ट प्लेन एंड और प्रोफाइल व्यू. यू हैव प्लेन व्यू. अब वो बोलता है कि मुझे कौन से सेक्शन का आपको देखना है. तो आई वांट टू सी दिस सेक्शन क्रिटिकल. ओके, एकदम दिस वाला. अब यहाँ पे मैंने जो टेम्पलेट ड्रॉप दिया था या फिर वो कट किया था कॉरिडोर अपना, आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे वो एंड कंडीशन नहीं दिखा रहा है. ओके, एज सुन एज आई विल मूव फर्दर, ये मेरी ब्लू लाइन दिखा रही है 2 लेन में. आप देख सकते हैं आगे जाइए, अब आ जाएगा एंड कंडीशन, अब आ गई है. ओके, सो दिस इज और सुपर एलिवेशन इज नथिंग बट एक अलग डीजीएन फाइल होती है. जैसे कॉरिडोर की अलग डीजीएन फाइल है, वैसे सुपर एलिवेशन की भी मैंने अलग डीजीएन फाइल बनाया है. ओके, सो यहाँ पे सुपर एलिवेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू हाउ टू असाइन सुपर एलिवेशन टू दिस कॉरिडोर एंड देन आई विल लास्टली इफ टाइम बचा तो मैं आपको बताऊंगा कि सुपर एलिवेशन बनाते कैसे हैं. ओके, अलग से फाइल कैसे बनाते हैं उसकी. ओके, दिस इज वेरी सुपर एलिवेशन फाइल मैंने अटैच नहीं किया. ओके, अटैच कर देते हैं अभी. वेरी सुपर एलिवेशन में. ओके, सुपर एलिवेशन फाइल ओपन. ये मैंने सुपर एलिवेशन फाइल अटैच कर दिया. ठीक है, अब हम कौन से इसके इस पे है आप देख सकते हैं. कहाँ है, 60 चलो मुझे नहीं पता 60 कहाँ पर है. तो हम लोकेट करेंगे यहाँ का. ओके, तो हम यहाँ का चेक करेंगे बस. अब मैंने सुपर एलिवेशन अपॉइंट कर दिया यहाँ पे, सिर्फ एक फाइल डिफरेंस में अटैच कर दिया और कुछ नहीं किया है. ठीक है, अब मैं करूंगा ये सुपर एलिवेशन जो फाइल है इस कॉरिडोर को असाइन करूंगा. सो फ्रॉम हियर सुपर एलिवेशन इज नॉट अ बिग टॉपिक फॉर हियर, क्योंकि हम सुपर एलिवेशन इज अ रूल फाइल जो बनी बनाई मिलती है हमें. उसमें सब स्टैंडर्ड्स, आईआरसी स्टैंडर्ड, एसओ स्टैंडर्ड, डीआरएमएस स्टैंडर्ड, सब अलग अलग स्टैंडर्ड्स की अलग अलग फाइल बनी हुई होती है जो हमको आपको सॉफ्टवेयर के साथ ही मिलती है. जिसका भी आप डिमांड करेंगे उसके साथ ही मिलेगी आपको. तो आप ऑस्टो बोलेंगे तो ऑस्टो मिलेगी, आईआरसी बोलेंगे तो आईआरसी मिलेगी. तो मैं सिर्फ अभी आपको असाइन करना बता रहा हूँ, हाउ टू असाइन दिस सुपर एलिवेशन द कॉरिडोर. सो लोकेट फर्स्ट सुपर एलिवेशन. ओके, अब मेरे फुल सेक्शन के लिए एक ही सुपर एलिवेशन है, इसीलिए अगर कुछ रहता तो मैं इतने सेक्शन के लिए अलग सुपर एलिवेशन अपॉइंट करता, फिर इतने सेक्शन के लिए अलग सुपर एलिवेशन करता है. तो अब मेरे होल अलाइनमेंट के लिए एक ही सुपर एलिवेशन है. नाउ इट इज सेइंग राइट रीसेट टू कंप्लीट. राइट क्लिक टू रीसेट. नाउ इट इज आस्किंग मी टू लोकेट कॉरिडोर अगेन. कॉरिडोर लेफ्ट क्लिक. ठीक है, लेफ्ट लेन, राइट लेन, एसोसिएशन, सुपर एलिवेशन. इस सुपर एलिवेशन के साथ क्या क्या एसोसिएट है, ये हम जब सुपर एलिवेशन क्रिएट करेंगे तब आपको पता चल ही जाएगा क्या क्या एसोसिएटेड है. ओके, ओके, दिस इज एसोसिएटेड. ओके, डन. जस्ट लुक एट दिस डायनामिक क्रॉस सेक्शन. ओके, अगर ये जब असाइन हो जाएगा तो आप इसको देखना क्या होगा. ओके, नाउ दिस सुपर एलिवेशन इज अपॉइंटेड असाइन टू द कॉरिडोर. ऐसा ही होना चाहिए सुपर एलिवेशन में. आउटर क्या बोलते हो जब पढ़ते थे तो आउटर एज ऑफ द रोड इज एलिवेटेड फ्रॉम द इनर एज, है ना. तो ये वही हो गया, आउटर एज फ्रॉम द ऑफ द अलाइनमेंट इज एलिवेटेड फ्रॉम द इनर एज, समथिंग लाइक दैट. अब ये पॉइंट और ये पॉइंट पिंक क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट में जब प्रॉपर्टीज में जाएंगे इसके यहाँ पे देखिए. ओके,
इस लाइन की इसमें गया, मैं डबल क्लिक किया इस पॉइंट के, सी सुपर एलिवेशन फ्लैग इज टॉगल्ड ऑन। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नहीं देता तो वो शायद उस टेम्पलेट पे वहां पे नहीं उठाता वो सुपर एलिवेशन। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें इस टेम्पलेट्स में रहती है जो हमें देखना पड़ता है। इसलिए इट्स आई एम सेइंग कि इट्स अ वेरी बिग टॉपिक एंड डिफरेंट टॉपिक व्हिच वी विल सून वी विल कवर। तो ये हमने सुपर एलिवेशन बना हुआ था पहले से, हमने अपॉइंट असाइन कर दिया उसको। ओके, सो नाउ आई विल टेल यू हाउ टू क्रिएट सुपर एलिवेशन। ओके, सो मैं सुपर एलिवेशन की फाइल ओपन करता हूँ। सिर्फ कुछ नहीं है, वो भी टू डी में रहती है, सीट फाइल 2D में रहती है वो, कुछ नहीं है उसमें। सिर्फ एक अपनी अलाइनमेंट है, सेंटर लाइन है, उसको हम लोग सुपर एलिवेशन देने वाले हैं। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से फाइल में कौन सी चीजें अटैच होनी चाहिए। जैसे टेरेन बनाते समय हम कुछ नहीं अटैच करना है, हमें सिर्फ सर्वे डेटा लगाना है, तो आपको पता है सर्वे डेटा कैसे लगाते हैं। ओके, फिर टेरेन के बाद हम क्या करते हैं, टेरेन मॉडलिंग करते हैं। टेरेन क्रिएट कर लिया, टेरेन मॉडल कर दिया। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सेंटर लाइन बनाते हैं। तो सेंटर लाइन बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, टेरेन ही चाहिए, तो टेरेन वाली फाइल उसमें अटैच की। फिर सेंटर लाइन और टेरेन आपके पास ये 2 डीजीएल फाइल होगी। फिर उसके बाद क्या बनाएंगे आप, बियॉन्ड सेंटर लाइन। ठीक है, एज ऑफ पेमेंट, एज ऑफ शोल्डर, ये आप वो सेंटर लाइन वाली फाइल में ही बना सकते हैं, या फिर आप इसको अलग से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरी फाइल हो गई आपकी। इस तीसरी फाइल में आपके दो ये चीज रेफरेंस रहेगी, सेंटर लाइन और टेरेन। ठीक है, अब ये 3 फाइल हो गई अपने पास, मान के चलते हैं। अब अपन चौथी फाइल बनाए हमने कॉरिडोर की। ठीक है, तो कॉरिडोर वाली फाइल में क्या रेफरेंस रहेगा, टेरेन, सेंटर लाइन और बियॉन्ड सेंटर लाइन वाली फाइल। ठीक है, जिसमें हम कॉरिडोर बनाएंगे, पूरी कॉरिडोर एडिटिंग करेंगे, कॉरिडोर मॉडलिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। फिर अपने पास 4 फाइल हो गई। पांचवी फाइल हमने बना सुपर एलिवेशन की। ठीक है, फिर सुपर एलिवेशन वाली फाइल में ये सब कुछ वो करेंगे, या फिर कॉरिडोर वाली फाइल में ही सुपर एलिवेशन वाली फाइल डिफरेंस करेंगे, क्योंकि सुपर एलिवेशन इज नॉट अ बिग टॉपिक। ये सब होने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, जो है हमारा ड्राइंग मोड, ड्राइंग प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ से हम ड्राइंग प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसको एनोटेट करेंगे। फिर एनोटेशन के भी अपने अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, हाउ यू वांट टू एनोटेट, कैसे यू वांट टू एनोटेट। तो ओ, मैंने यहाँ पे कॉरिडोर बना दिया है ना। ओके, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा सुपर एलिवेशन। हम जो बता रहा था मैं कि क्रिएट सुपर एलिवेशन सेक्शन। what is the name of this section, section 1 I want to create, just left click, locate the corridor। okay, locate the corridor। ठीक है, अब सुपर एलिवेशन कौन सा हिसाब से देना है आपको, IRC, आई हैव अस्टो टी मेथड्स ऑफ 2011। तो ठीक है, आई वांट टू गिव दिस, लेफ्ट क्लिक। ओके, व्हाट इज योर मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, 1000। अगर मैक्सिमम लेंथ 10,000 से कम है तो वो उतना ही सुपर एलिवेशन सेक्शन बनाएगा, उसके बाद वाला आपको दूसरा बनाना पड़ेगा। ऐसे वो अलग अलग सुपर एलिवेशन डिवाइड करेगा। बट आई डोंट थिंक मैक्सिमम लेंथ 10,000 से कुछ ज्यादा होगी मेरी, तो इसलिए मैंने मेरे को पूरा होल अलाइनमेंट का एक ही सुपर एलिवेशन देना है, इसलिए मैंने 10,000 दिया उसको। ओके, लेफ्ट क्लिक अगेन, लेफ्ट क्लिक, so it is assigning a super elevation, creating a super elevation। okay, so I guess super elevation file has been created now। हाँ, ठीक है, सुपर एलिवेशन की फाइल क्रिएट हो गई, यहाँ पे आप वो देख सकते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट कॉरिडोर सुपर एलिवेशन। ओके, अब मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाऊंगा। आई वांट टू से कि इट्स नॉट ड्राफ्ट ब्रो, it is a final super elevation। So I will change its definition to draft to final one। Okay, from here draft level, not draft one, to the final one। So I will change its level from draft to whatever I need। Okay, so okay, अब मैं बनाऊंगा, सेक्शन बना लिया मैंने, सिर्फ सेक्शन बनाया है। ठीक है, अभी तक और कुछ नहीं बनाया। अब मैं उसमें लेन्स बनाऊंगा, सुपर एलिवेशन लेन्स। ठीक है, बिफोर दैट आई नीड टेम्पलेट ऑफ कोर्स। कौन से टेम्पलेट देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए। तो टेम्पलेट तो है हमारे पास, टूलियन, रूलर, ये सब हमने यूज किए। सो लेंस कौन से देंगे हम, लोकेट सुपर एलिवेशन। ठीक है,
ये हमने सुपर एलिवेशन लोकेट कर दिया, रीसेट कर दिया। अब इट इज आस्किंग मी लेफ्ट लेन, नेम ऑफ लेन, लेन LEFT, left lane I want to create. Okay, now left click, type, which type, primary type, auxiliary primary type, side of center line, कौन से side, as I given the name left, तो मैं left ही बताऊंगा, तो left और right दो ही है, left, left, inside edge offset, ठीक है, inside edge offset कितना offset चाहिए, inside edge का 0, ठीक है, width 12, पहली टेम्पलेट में देख चेक कर लिया हमने कितनी थी width, और यहाँ पे चेक कर लिया लेफ्ट। ओके, क्रॉस स्लोप -2.5, तो देखिए यहाँ पे उसने एक ग्रीन कलर की सेंटर लाइन के इस साइड बना दिया है, ठीक है, फाइन। अब मुझे बनाना है राइट साइड के लिए, सेम अगेन, लोकेट सुपर एलिवेशन, ठीक है, लोकेटेड, रीसेट, और लेन लेफ्ट, लेन राइट, लेन राइट, ओके, लेफ्ट क्लिक, प्राइमरी, सेंटर, मैं एरो से भी कर सकता हूँ यहाँ से, नहीं तो मैं डाउन एरो आई विल यूज, लेफ्ट क्लिक, yes 0 12, okay, see it created another this side, right side वाला, okay। अब इसने लेन तो बना दिया मेरे लिए, बट यहाँ पे सुपर एलिवेशन असाइन तो नहीं किया इसने किसी चीज को, ठीक है। अब ये कॉरिडोर में असाइन होना भी तो चाहिए, तो व्हाट इट विल डू, इट विल कैलकुलेट सुपर एलिवेशन, व्हाट डू, तो कैलकुलेट करेगा वो सुपर एलिवेशन। हमने कैलकुलेट किए कितना है, लोकेट सुपर एलिवेशन सेक्शन, रीसेट टू कंप्लीट, ठीक है, सेम दैट स्टैंडर्ड, what is 6 speed table, from speed table this file also you get with Bentley software, or else you can get with this Asto also, whatever you can, this speed table, sorry, this Asto means which you get with Bentley, and speed table means which you create by your own, it is a notepad file, ठीक है। जब आप बेंटली के सॉफ्टवेयर खरीदेंगे उसके सी ड्राइव में देखिएगा स्पीड टेबल के फोल्डर में एक फाइल होगी नोटपैड वाली, वो नोटपैड फाइल पूरी स्पीड टेबल की फाइल है आपके। सो आई विल गो विद स्पीड टेबल एंड डिजाइन स्पीड विल बी 55 एंड क्राउन मींस, सी व्हाट इट सेज, कौन सा चाहिए आपको, क्राउन, इनसाइड एज, आउटसाइड एज, कहाँ से वो टेपर होना चाहिए, आई वांट क्राउन वन बिकॉज इट इज अ 2 लेन रोड, है ना, सो आई वांट फ्रॉम सेंटर क्राउन, ओके, क्राउन, ओपन एडिटर, नो, सी दिस कलर चेंज, सुपर एलिवेशन कहाँ लगता है ये सब आपको पता ही होगा, ओके। अभी तक ये लाइन पूरी ग्रीन थी, ठीक है, कर्व में सुपर एलिवेशन ज्यादा होना चाहिए, तो ये कर्व का जो कलर है वो कलर डिनोट्स द लेवल ऑफ सुपर एलिवेशन, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ सुपर एलिवेशन, विच डिफरेंट कलर डिनोट डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ सुपर एलिवेशन, ओके। ऐसे ही आप इसके क्रॉस सेक्शन में जाएंगे तो आपको सेम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज होते हुए दिखेगा। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड, कुछ आप प्रैक्टिस कीजिए, जिसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारी मार्केटिंग टीम से कांटेक्ट कीजिए कि हाउ टू प्रोक्योर सॉफ्टवेयर, कैसे मिलेगा, ट्रायल चाहिए, खरीदना है, जो चाहिए आप यूज कीजिए, आपको यूज करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी, उसके पहले आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी, बट आई हैव सम लेस नॉलेज इन दिस इंस्टॉलेशन एंड IT वाला फील्ड में, तो आई कैन गाइड यू, बट आई कैन शो यू द डायरेक्शन, आपको किससे कांटेक्ट करना है मैं वो बता दूंगा। सो आप यूज कीजिए सॉफ्टवेयर, नहीं कुछ हो पा रहा है तो मुझे मेल कीजिए, मुझे लिखिए व्हाट इज सिविल एक्यूड्रॉ, सिविल एक्यूड्रॉ भाई इज राजेश शर्मा सर, सिविल एक्यूड्रॉ मीन्स इट इज यूज टू डिजाइन योर अलाइनमेंट with respect to something else. Something else means if you want to design your alignment with your ground profile, okay. C means if your profile, I want my profile from garage at some chain edge, my profile wants to be 5 meter above from this ground, okay. So I will use AccuDraw, some design intent tool, this is, so that AccuDraw is purposefully I want to draw this on a precise manner, precisely मुझे बनाना है वो, ठीक है, तो इसीलिए मैं यूज करूंगा एक्यूड्रॉ, नहीं तो सिंपल तो मैं भी कुछ भी बना सकते हैं हम लोग,
ऐसा कुछ नहीं है, बट स्मार्टली डम ग्राफिक हमें नहीं बनाना है, हमें कुछ इंटेलिजेंट ग्राफिक बनाना है, इसलिए हम सिविल एक्यूडो यूज करते हैं। ओके, आई आंसर सम क्वेश्चंस, लोगों को अभी डाउट आ रहे हैं, अदरवाइज ओके। टू स्क्रीन सी ओके। After creating geometry, why to create slash save it as a complex geometry? See, brother, we didn't create geometry. We created element at that time. After making it complex, that only it became a geometry. हमने पहले जब बनाए तो उसके एलिमेंट्स बनाए, एक एक टेंजेंट बनाए, कर्व बनाए, टेंजेंट बनाए, कर्व बनाए, टेंजेंट बनाए, कर्व बनाए। सो ये टेंजेंट कर्व, टेंजेंट टेंजेंट कर्व, ये सब एलिमेंट्स है। ठीक है, जब हम उसको कॉम्प्लेक्स करेंगे तभी वो ज्योमेट्री बनेगा ना, एक साथ रहेगा तभी वो ज्योमेट्री रहेगा। सिंगल सिंगल सेपरेट सेपरेट रहेगा तो वो ज्योमेट्री कैसे कहलाएगा, वो तो एक एलिमेंट ही कहलाएगा। सो दैट इज व्हाई वी वांट टू, इसलिए उसका नाम कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बोला गया, इसलिए उस टूल का नाम, वी आर कॉम्प्लेक्सिंग दैट ज्योमेट्री। ओके, so this is my contact, you can mail me here your doubts, you can contact me on this number and I'll be there for your help, for any kind of help regarding software, officially or unofficially. Okay, so that's it from my side. Thank you Shweta for organizing this smart webinar. Okay, so thank you everyone for joining. Hope आप सबको थोड़ा बहुत तो भी सीखने मिला होगा। ओके, ओके श्वेता, shall I leave? हेलो, 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 हेलो।